अनिल जो नॉन सेकंड पर नजर आ रहे हैं, ये सलामी जोड़ी मैदान पर एफटीएल टीम की नजर आती हुई। फील्डिंग टीम, सेंड योर एक्स्ट्रा पर्सन इन कमेंट्री बॉक्स प्लीज। दक्ष शर्मा के हाथों में गेंद। पहला ओवर की शुरुआत दक्ष करेंगे। फार एंड से मध्यम गति तेज आक्रमण। अंपायर का इशारा, लेट्स प्ले बिगन। यस, द काउंटडाउन इज बिगन गाइस, द सेकंड मैच ऑफ डे 3। Here we go. 5, 4, 3, 2, 1. Let's play. फर्स्ट बॉल। दक्ष अपने बॉलिंग मार्क पर सज्ज होते हुए पहली गेंद लेकर। ये अच्छी गेंद, बैकफुट पे गए, जगह बनाई, प्रेस किया, बेहतरीन कट, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, प्रोटेक्शन है वहां पर। उठती हुई गेंद, पटकी हुई गेंद थी। ऑफ स्टंप के बाहर जरा सी विड्थ मिली थी, लेकिन उसका फायदा उठाया। एक रन के साथ शुरुआत की, खाता खोला, अकाउंट ओपन किया सिंगल के साथ। अनिल जो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन मैदान पर नजर आता हुआ। दाएं बाएं हाथ की जोड़ी मैदान पर। फील्डिंग का मुआयना करें तो आप देख सकते हैं स्लिप यहां पर मौजूद है, कैचिंग पोजीशन अवेलेबल है। गली कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ सर्कल के अंदर। स्वीपर कवर पर भी एक खिलाड़ी रख दिया गया है। इस बीच ये गेंद पुल करना चाहते थे और बढ़िया प्लेस किया है, थोड़ा अंदरूनी सरा लगा और डीप फाइन लेग क्षेत्र से गेंद निकल जा रही है सीमा रेखा पार, और यह है इस मैच का पहला चौकार। थोड़ी लेग स्टंप के बाहर गेंद जरूर थी, लेंथ थोड़ी लेग स्टंप के बाहर थी, उसका फायदा उठा अनिल ने। पुल करना चाहते थे, ठीक से गेंद बल्ले पे आई नहीं, लेकिन तब भी ये गेंद निकल गई फाइन लेग क्षेत्र को, डीप फाइन लेग क्षेत्र को लांघती हुई 4 रन के लिए। इस बार ये अच्छी गेंद, उतने सही ढंग से खेला इसे। गेंद के पीछे आकर बल्ले का मुंह खोला और गाइड किया गेंद को गली की दिशा में, और ये ओवर थ्रो का रन। बैकअप नहीं है वहां पर, इसका फायदा उठाया, पलक झपकते ही इस मौके को ताड़ा और छोर बदला, स्कोर भी बदला। 6 रन बिना कोई रन विकेट के। राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन, दाएं हाथ की जोड़ी मैदान पर होना, यानी फील्डिंग में बार बार तब्दीली, और गेंदबाज को भी अपनी लाइन और लेन को बदलना ही पड़ता है। दक्ष फार एंड से काफी अच्छी इनकी ये रिदमिक रनअप उनका बहुत बढ़िया है। इस बार अच्छी गेंद, और ये गेंद वही रुकी, जल्दबाजी में रन लेना चाहते थे। अगर ये गेंद स्टंप को डायरेक्ट हिट लगती तो कुछ घटना घटित होने वाली थी। ये काफी तेज रन लिया, हालांकि गेंद कहां थी, लगी बल्ले के अंदरूनी किनारे, स्टंप के यहां ही लुढ़कती हुई। काफी तेजी के साथ स्लिप की खिलाड़ी आ गया है, पिक किया, गेंद को थ्रो किया, लेकिन अगर ये सीधा निशाना लगता तो फिर ये कार्यक्रम तय था। लेकिन ये काफी जोखिम भरा रन, जबकि पहला ही ओवर चालू है। काफी जोखिम उठाई इस बार। दक्ष फार एंड से अनिल के लिए। ये अच्छा शॉट, क्लासिक शॉट, लेकिन वहां पर खिलाड़ी है मौजूद डीप बैकवर्ड पॉइंट की जगह पर। गेंद को जल्दी रीड किया था और स्ट्रोक को एग्जीक्यूट किया।
डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, भले कि बीचों बीच लेकर गेंद को निकाल दिया था उन्होंने 1 रन के लिए। अनिल और राइट हैंडेड बैट्समैन जितेश, ये दोनों काफी अनुभवी सलामी बल्लेबाज हैं, जानते हैं अहमियत को पहले पावर प्ले के 6 ओवर की। अब स्लिप को हटाया गया है सामने वाले छोर से दक्ष। ये पुल किया है बल्ले के बीचों बीच, लेकिन खिलाड़ी है और ये कैच वहां पर लेकर वो फिसल गए। वहां पर अंपायर का इशारे का इंतजार, ये 4 रन के लिए, क्योंकि गेंद आगे गिरकर शायद संतुलन खो बैठे। पोजीशन में आए जरूर थे, बल्लेबाज ने गेंदबाज ने जाल बोना जरूर था और शॉट भी अच्छा था। गेंद ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम थी, लेकिन खिलाड़ी को वहां पर रखना और उसी क्षेत्र में कैच का आना काफी बढ़िया ये मौका था, लेकिन बोना नहीं गया। ओवर की समाप्ति इसी के साथ स्कोरबोर्ड पर 12 रन बिना कोई विकेट खोए। जो दर्शकों ने अपने मोबाइल देर से ऑन किए हो उन्हें जानकारी दे दो, टीम एफटीएल और टीम एसकेसीएस की ये टीम है, सुलक्षण कुलकर्णी क्रिकेट एकेडमी की ये टीम। यस अंपायर, रिव्यू उसके लिए ओके। वो जो कैच छूटा था उसके लिए अंपायर ने रिव्यू मांगा है, कंफर्म करना चाहते हैं अंपायर, या 6 रन है या 4 रन है, कैच छूटा जरूर है। द रिव्यू टेकन। रिव्यू लिया गया है, अंपायर रिव्यू कंफर्म करना चाहते हैं अंपायर्स। रिव्यू इज टेकन बाय द अंपायर नाउ। 4 रन का इशारा अंपायर की तरफ से हो गया था, सॉफ्ट डिसीजन 4 रन का ही होगा, लेकिन क्या ये गेंद हाथ में रहने के बाद संतुलन बिगड़ा है और उनके शरीर का टच हुआ है कि नहीं बाउंड्री लाइन से, यही देखना होगा, क्योंकि हर एक रन की अहमियत है T20 फॉर्मेट में। काफी बड़ी ये प्रतियोगिता, ठाणे प्रीमियर लीग सीजन 14, काफी बड़ा आयोजन है। प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों को अनुभवी एक्सपीरियंस खिलाड़ी के साथ खेलने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मौका मिला है, और ठाणे जिले के सभी क्रिकेट खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको एक अपनी प्रतिभा, अपने कौशल्य को, अपने टैलेंट को बताने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर उपलब्ध है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन मान्यता प्राप्त ये टूर्नामेंट है, उप मुख्यमंत्री चषक 2026। हमारे माननीय नगर सेवक और एपेक्स काउंसिल मेंबर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के विकास जी रेपाड़े साहब, इनके संकल्पना से ये 14वां साल 13 साल ये टूर्नामेंट काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आयोजन किया। काफ़ी बढ़िया प्रयास है ये क्रिकेट को और एक अलग ऊंचाई पर लेने का ठाणे क्रिकेट को। चलिए इंतजार का हो रहा है अंपायर के डिसीजन का। दैट्स अ बाउंड्री गिवन बाय द थर्ड अंपायर। ये 4 रन जो सॉफ्ट डिसीजन था वही कायम रहेगा और स्कोर वही कायम रहेगा, 12 रन बिना कोई विकेट के। दूसरा ओवर जारी रखते हुए नए गेंदबाज हर्ष कॉमेडी बॉक्स एंड से शुरुआत करने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंडर बैटर अनिल के लिए एक स्लिप फिर हर्ष के लिए लगाई गई है। छह खिलाड़ी ऑफ साइड पर, 3 खिलाड़ी लेग साइड पर। इस व्यू रचना के साथ हर्ष पहली गेंद लेकर
इस बार लेग स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा, दोए बाएं फैलाकर वाइड का, अतिरिक्त रनों में 1 रन शुमार होता हुआ। लेंथ लेग स्टंप के बाहर, ज्यादा बाहर, और गति आपके पास है, लेकिन नियंत्रण, एक्यूरेसी, ये भी तो अंग है अच्छे गेंदबाजों का। अनुशासन उसमें सर्वोत्तम होना चाहिए। पहली गेंद है, स्कोर में 1 रन की बढ़ोतरी एक्स्ट्रास के रूप में। यह स्लैश किया है हवा में, लेकिन ओ डीप बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन ऑकवर्ड बाउंस की वजह से ये 4 रन के लिए निकल गई गेंद। जो मौके की तलाश में थे, ऑफ स्टंप के बाहर जरा से विड्थ मिली थी, जगह बनाई, और जो फ्लरिश स्क्वायर खेला है डीप बैकवर्ड पॉइंट पर, इसके लिए मौजूदगी है खिलाड़ी के। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार फुलर लेन, बहुत चतुराई का इस्तेमाल इस बार गेंदबाज हारिस द्वारा। पहली गेंद थोड़ी शॉर्ट ऑफ गोल्डन पे छोड़ दी, इस बार फुलर लेन की गेंद। बल्लेबाज को उन्होंने कहा कि आपके पास है तो आप बड़ा स्ट्रोक खेले, जगह से गेंद को खेलना चाहते थे विदाउट यूज दिस फुटवर्क। ये फिर वही इशारा, नो बॉल, लेकिन अंपायर का इशारा, नो गेंद, फ्रंट फुट नो। और अब इसके बाद आपको मिलेगा लाइसेंस टू हिट द बॉल, फ्री हिट। गेंद की गति को थोड़ा बढ़ाने के प्रयास में ये एक्स्ट्रा मिलते हुए, अब अनिल किस ढंग से इसका लाभ उठाते हैं ये देखना उचित होगा। इस फ्री हिट का ब्लैंक चेक मिला है उनको। ये बड़ा हिट करना चाहते थे, बॉटम का इस्तेमाल किया, लेकिन बढ़िया फील्डिंग सर्कल के अंदर, अच्छी गेंदबाजी नजर भी आई। इस बार थोड़ा ब्लॉक होल में डालने की कोशिश की थी, गेंद जड़ से टकराकर सर्कल के अंदर मिडविकेट के क्षेत्र में रुकी भी गई डॉट के रूप में। अनिल सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार लेग स्टंप के बाहर इंपैक्ट जरूर है, देखते हैं अंपायर का इशारा, गेंद पैड से टकराई है या बल्ले से अंदरूनी की तरफ लगा। यस, अंपायर सिग्नल दैट इज अ लेग बाय, यानी अतिरिक्त रनों में और 1 रन शुमार होता हुआ। स्कोर 19 रन दर्शाता हुआ स्कोरबोर्ड पर। हालांकि इसमें एग्रेसिव अप्रोच अगर देखने मिला है तो अनिल का, जो भरकस प्रयास कर रहे हैं, अगर गेंद थोड़ी सी लूज मिली उस पर टूट पड़ने का काम करना चाहते हो। राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन वैसे ही मैदान पर काम करता हुआ एफटीएल के लिए। ये पैरों में अंदर किनार लगा भी होगा, लेकिन यॉर्कर लेंथ जड़ में डाली हुई गेंद बल्लेबाज के लेग साइड में खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गति बहुत अच्छी है इस गेंदबाज के पास, हर्ष के पास। स्विंगिंग यॉर्कर कहा जाए। दूसरा ओवर जारी है इस मैच का। हर्ष अपने मार्क पर निकलते हुए कॉमेंट्री बॉक्स एंड से राइट आर्म और दे विकेट। इस बार बहुत ही बढ़िया, वन ऑफ द क्लासिकल, मार्वलस, एक्सेलेंट ब्लो। क्या यह क्लासिकल स्ट्रोक है। जैसी गेंद थोड़ी सी आगे मिली, जगह से गेंद को बल्ले के बीचों बीच, ओपन द फ्लो ऑफ द बैट, परफेक्ट टाइमिंग। तीर की गोली के, बंदूक की गोली से निकलते गोली वैसे ही गेंद निकली, बिल्कुल हिलने का मौका भी नहीं दिया। स्ट्रेट ड्राइव फॉर क्लासिकल बाउंड्री।
इस ओवर को फिनिश किया है 4 रन के साथ। 2 ओवर के पश्चात स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 23 रन। अच्छी शुरुआत मिली है। पहले ओवर में 12 रन थे, इस ओवर में 11 रन, यानी कुल स्कोर 23। गेंदबाजी में फॉरेन से वही क्रम जारी रखते हुए गेंदबाज दक्ष, ये लॉफ्टेड शॉट, स्लॉग हिट, और ये चली जाएगी दर्शक दीर्घा में। डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से ये उड़न खटोला 6 रन के लिए। कमाल का ये पिकअप शॉट था। अनिल जो बेहतरीन फॉर्म में भी है, जल्दी गेंद को पिक किया था, और जो फ्लो था बल्ले का, स्विंग था, ये काफी बेहतरीन, काफी जल्दी पढ़ लेते हैं गेंद को और फिर छक्का जड़ देते हैं। ये स्लोअर वन बहुत बेहतरीन 100 शॉट, थोड़ी गति में परिवर्तन किया, लेकिन 2 रन यहां पर जरूर मुकम्मल करेंगे दोनों बल्लेबाज। ऑप्शन के बाहर खुद से बातें करते हुए अनिल, एक अच्छी निशानी होती है अच्छे बल्लेबाज की कि वो खुद से बातें करे, कहां पर गलती हुई है, मुझे क्या करना चाहिए था, ये बातें। लेकिन स्कोर काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ अब स्कोरबोर्ड पर नजर आ रहा है। 31 रन बिना कोई विकेट खोए। जितेश और अनिल की ये जोड़ी अच्छी कारीगिरी साबित होती है अब तक। दक्ष फार एंड से बॉलिंग मोर्चा पर सच, ये पुल करना चाहते थे, देखते हैं गेंद लेग स्टंप के ऊपर से गई का बाहर से। अंपायर ने कहा नहीं, आपको ये गेंद दोबारा डालनी होगी क्योंकि ये लेग स्टंप से बाहर गेंद निकली है। वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से। 1 रन का इजाफा स्कोर में, अतिरिक्त स्वरूप में स्कोर 32 रन दर्शाता हुआ। मैं बार बार कह रहा हूं आपके पास गति हो लेकिन नियंत्रण सबसे बढ़िया बात होती है। ये नियंत्रण, एक्यूरेसी काफी इंपॉर्टेंट है। बातें करते हुए कैप्टन अपने गेंदबाज के साथ, किस ढंग से गेंदबाजी होनी चाहिए, दोनों बल्लेबाजों को देखा है उन्होंने, उनका अप्रोच, तो जरूर कुछ अनुभव की बातों का आदान प्रदान। फिर एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर। दक्ष इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया, आंखों आंखों में इशारा हो गया और 1 रन का सहारा भी हो गया। बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दिस टू बैटर। हल्के हाथों से गेंद को खेला था, खिलाड़ी थे वहां पर मौजूद सर्कल के अंदर। जब तक वो गेंद को पिक करते, थ्रो करते, दोनों ने काफी तेज गति से रन को कंप्लीट किया। यह आपसी सूझबूझ का नतीजा होता है। सिंगल के साथ भी स्कोर आगे बढ़ता है और एक खासियत होती है T20 क्रिकेट की, आपको स्कोरबोर्ड को चलाते रहना चाहिए। जितेश सामना करेंगे दक्ष की अगली गेंद का। इस बार अच्छी गेंद, क्लासिकल डिलीवरी, नाइस स्केल ऑफ डिलीवरी। ऑफ स्टंप के बाहर तेज गति से शॉर्ट ऑफ गुडलैंड से गेंद सीधी रही, बल्लेबाज का डिफेंस को भेजती हुई विकेट कीपर के ग्लोव्स में कंप्लीट बिट किया फ्रंट फुट पे। इस बार दक्ष ने कहा कि जागते रहो, दक्ष ने जरूर कहा होगा, और काफी गर्म वातावरण है, काफी हिट अंदर है। चलिए दक्ष फार एंड से, ये वही गेंद लेकिन ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर। अंपायर ने फिर इशारा किया है, 2 बाहें फैलाकर, ये वाइड, अतिरिक्त रनों में और 1 रन शुमार होता हुआ। लेकिन जिस ढंग से जितेश ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, फार एंड से अनिल ने बताया, कुछ बातें की,
ये गेंद इस बार गेंद के पीछे आए, हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया था कवर क्षेत्र में, और 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने अपने शोर बदले। फिर एक बार गेंदबाज, ये फ्रंट फुट पे हल्के हाथों से गेंद को खेल जाता है मिड ऑफ की जगह पर, सर्कल के अंदर जब तो गेंद को रोका जाता। 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के पश्चात स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 36 रन, यानी 12 रन प्रति ओवर के माध्यम से रन बनाने में कामयाब हुई है एफटीएल की टीम। दोनों सलामी बल्लेबाज जितेश और अनिल। देखिए काफी गर्म वातावरण, इतना ये हीट है, इसमें इन खिलाड़ियों की दमखम, क्षमता, स्टैमिना की परीक्षा है, लेकिन कमाल का क्रिकेट खेलते हुए सभी खिलाड़ी। अब जिसके नाम के चर्चे है क्रिकेट जगत में है ठाणे प्रीमियर लीग एडिशन 14। गेंदबाजी में तब्दीली नजर आ रही है। सोहन को बुलाया गया है, स्पिन आक्रमण को मोर्चे पे लगाया गया है कमेंट्री बॉक्स एंड से। अनिल सामना करेंगे जिन्होंने आक्रामक रवैया अपना है। ये लेग स्टंप पर हल्के हाथों से खेल दिया था और आसानी के साथ सिंगल को कंप्लीट भी किया। हालांकि अनिल काफी एग्रेसिव अप्रोच में है, जितेश भी बड़े स्ट्रोक लगाना जानते हैं, लेकिन इस बार सपोर्टिंग रोल में नजर आते हुए सोहन अपनी गेंदबाजी का क्रम जारी रखते हुए अब पहली बार सामना करेंगे जितेश। इस बार हल्के हाथों से खेल के रन लेने का तो कोई यहाँ पे चांस ही नहीं था। कवर के क्षेत्र रक्षक वहां पर सशक्त मौजूद है। इस बार ये लूज डिलीवरी, हाफ ट्रैकर आसानी के साथ जितेश ने इसके बल्ले के बीचों बीच लेकर इसे भेज दिया है दर्शक दीर्घा में। काउ कॉर्नर के ऊपर से बेहतरीन सिक्सर, ये लगा छक्का और गेंदबाज तो रह गया हक्का बक्का, क्योंकि आप ऐसी लूज डिलीवरी करेंगे तो आपका स्वागत तो होने वाला है। मानो तोहफा ही दिया था, कबूल हो कहा बल्लेबाज ने। इस बार ये अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को सीधा रखा, फ्रंट फुट पे बल्लेबाज को कंप्लीट बीट किया। इस बीच ये गेंद तेज गेंद थी, परिवर्तन के तौर पे, बदलाव के तौर पे गेंद को तेज रखा। उतना ही फ्लशिंग डाइव खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा। 1 रन डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। बार बार देखिए फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है। राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन, दाएं की जोड़ी मैदान पर कार्यान्वित होती हुई। स्कोर है स्कोरबोर्ड पर 44 रन, जबकि चौथा ओवर इस इनिंग का सोहन जारी रखते हुए। इस बार हल्के हाथों से गेंद को मोड़ दिया था, रन लेना चाहते थे, लेकिन देखा खिलाड़ी काफी मुस्तैदी के साथ गेंद को रोकने में कामयाब। डॉट के रूप में ये ओवर समाप्त होता हुआ 4 ओवर 44 रन बिना कोई विकेट के।
44 without any wicket. बल्लेबाजों ने खराब गेंद का, लूज डिलीवरी का इंतजार भी किया है, अच्छे गेंद को सम्मान भी दिया है। चार ओवर में एक सिक्सर जरूर जड़ाने में कामयाब जितेश हुए थे, लेकिन लेफ्ट आर्म बल्लेबाज जो 900 के रन पर है अनिल, ये जितेश से ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच में नजर आए, अपनाते हुए एग्रेसिव अप्रोच। फार एंड से गेंदबाज में तब्दीली, यासीन शेख स्पिन आक्रमण फार एंड से शुरुआत करते हुए इस बार ऑन साइड में मिडान की दिशा में खेलकर 1 रन पूरा किया, कंप्लीट किया, स्कोर को आगे बढ़ाया 45 रन। ये अच्छी पार्टनरशिप बनी है, ये अच्छी पार्टनरशिप बन भी है। 45 रन, 5 ओवर जारी है। ये अच्छी गेंद थी, थोड़ी लो ट्रैजेक्टरी की, पहले गेंद के पीछे आए, स्टंप को कवर किया, खेल दिया था कवर क्षेत्र में बिना कोई रन के। यासीन फार एंड से ये स्लॉग इट, क्या रोक पाएंगे, लेकिन गैप में गेंद को रखने में कामयाब अनिल, और गेंद 4 रन के लिए सीमा रेखा पार, मिलेंगे रन पूरे पूरे 4। जैसे गेंद को देखा थोड़ी शॉर्ट लेन गेंद है, पोजीशन में बैकफुट पे गए और पोजीशन में आकर खेला हुआ है, बेहतरीन स्लॉग इट। ये हवा में उड़ाया गेंद को, नो मैंस लैंड से गेंद निकलेगी, हो ये तो ऊपर से गई है, ये बेहतरीन पावर हिट, चौकी के बाद अब ये सिक्सर। अनिल, मैंने कहा था एग्रेसिव अप्रोच अपनाते हुए, आक्रामक रूप धारण करते हुए, और इसी के साथ 50 रन पूरे, 50 कंप्लीट फॉर एफटीएल, टीम एफटीएल। साझेदारी 50 की हो चुके हैं दोनों के बीच। ये पैडल शॉट है, बहुत ही बढ़िया प्लेस किया है, क्लासिकल शॉट, पहली ताकत अब नजाकत यहां पर दिखाई दी। अनिल इंप्रोवाइज शॉट खेलते हुए, काफी बढ़िया ये 3 गेंदों का उपयोग किया है अनिल ने। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को जो उड़ाया उन्होंने, ये तेज ड्राइव था, ऑन ड्राइव, डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन, लेकिन इस ओवर में भरपूर समाचार लिया गेंदबाज का। अच्छा ओवर घटा है टीम एफटीएल के लिए, क्योंकि 5 ओवर के पश्चात स्कोर है स्कोरबोर्ड पर 60 रन, यानी जो 10 रन के माध्यम से स्कोर बन रहा था वो अब 12 रन प्रति ओवर के माध्यम से रन बनाए हैं। 5 ओवर 60 रन बिना कोई विकेट खोए। पावर प्ले का आखिरी ओवर आना बाकी है। दोनों बल्लेबाज जानते हैं, जितेश और अनिल, इस आखिरी 6 गेंदों की अहमियत, क्योंकि इसके बाद पावर प्ले के लिए जो बंधन था फील्डिंग का वो उठाया जाएगा, क्षेत्ररक्षण फैला भी जा सकता है। देखते किस ढंग से ये दोनों बल्लेबाज इस ओवर का सामना करते हैं, क्योंकि कमेंट्री बॉक्स एंड से
हर्ष छठा ओवर लेकर पहली गेंद, ये यॉर्कर लेंथ, इस बार गेंद निकल गई है, विकेट कीपर रोकने में नाकामयाब, पैर से टकरा कर गेंद निकली, जिसके लिए अंपायर का इशारा आ रहा है कि 4 रन लेग बाय के रूप में। समीर दिरवानी जो मुख्य अंपायर के रूप में, और स्क्वायर लेग पर सागर मुळे। आप देख रहे ऑफिशियल्स अंपायर इस मैच की निगरानी करते हुए। ये पुल करना चाहते थे, गेंद बल्ले पर ठीक से आई नहीं, लेकिन सर्किल के अंदर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन रन नहीं रोक पाएंगे। इस स्ट्रोक में आत्मविश्वास कम झलका जरूर था अनिल के। देखा शॉर्ट पिच उठती हुई गेंद है, जल्दी उस पर टूट पड़ना चाहते थे, लेकिन तेजी से के साथ गेंद उठी थी, इसके लिए बल्ले पे ठीक से आई नहीं। हड़बाट में शॉट स्ट्रोक को खेल बैठे थे, लेकिन 1 रन मिलेगा। शॉर्ट फाइन लेग पर खिलाड़ी सर्किल के अंदर जब को रोक पाते, दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदले। 65 रन काफी सोच विचार में डाला है इन्होंने सुलक्षण कुलकर्णी क्रिकेट एकेडमी की टीम को, क्योंकि ब्रेक थ्रू की तलाश में यह टीम। यह अच्छी गेंद तो नहीं कहा सकता, लेकिन मिडल और लेग स्टंप से बाहरी लेंथ रखा था और कलाइयों के साथ गेंद को मोड़ दिया था सिंगल के लिए स्क्वायर लेग अंपायर के बाजू में। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66 रन, 66 विदाउट एनी विकेट। आखिरी ओवर प्रगति पथ पर, 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदें शेष है। अब देखते हैं अनिल किस ढंग से आगे बढ़ते हैं। ये देखिए लेग स्टंप के बाहर और बाहर, अंपायर ने कहा हाँ जी ये वाइडी है और आपको ये गेंद दोबारा डालनी होगी। मैं बार बार कह रहा हूं गति है वो ठीक है भाई, लेकिन नियंत्रण अनुशासन भी तो उतना महत्वपूर्ण अंग है गेंदबाज का। स्टंप दिख रहे हैं आपको, अंदर गेंद फिनिश करो। चलिए गेंदबाज हर्ष, इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, लेकिन ये कहां गई गेंद, ये तो ऊपरी सिरे पे लगी और ये 6 रन। शॉट खेलना चाहते थे मिड विकेट क्षेत्र में, फ्लो ऑफ द बैट, स्विंग ऑफ द बैट वही था, लेकिन बड़ा सिरा लगा ऊपरी हिस्सा और गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से चली गई दर्शक दीर्घा में। क्या पावर और स्विंग होते हैं बैट, जो फ्लो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। जबरदस्त स्ट्रोक है ये। अनिल रुद्र अवतार धारण करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार लेग के बाहर है, अपील हुई है, लेकिन वाइड का इशारा, ये सही लाइन और लेंथ नहीं है। अब ऐसे वक्त पर किसी ने आकर बात करना चाहिए। देखते भटकते मन को शब्दों का आधार होता है भाई। देखिए आकर उनसे बात की, कमान स्कोर काफी तेजी के साथ आगे बढ़ा है, 74 रन। ये देखिए लेग स्टंप के बाहर, या लगातार वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से। थोड़ा मेंटली प्रेशर महसूस करते हुए गेंदबाज कुछ दबाव महसूस करते होंगे। अनिल बिगिटी करना चाहते हर गेंद को, लगता है बाहरी भेजना चाह रहे हो। टोटल स्कोर 75। ये फिर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पे ठीक से आई नहीं, लेकिन खेल बैठे थे डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 रन जरूर मिलेगा।
देखिए अनिल सबसे खासियत तो खुद से बात करते हैं। आखिरी गेंद, पावर प्ले के छठे ओवर की आखिरी गेंद, सामना करेंगे जितेश। क्या जितेश बड़े हिट के लिए जाएंगे, क्या सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करेंगे, यही देखना होगा क्योंकि आखिरी गेंद है पावर प्ले की। ऑफ स्टंप से बाहर और बाहर, ये वाइड, ये कितने वाइड है इस ओवर में देखते हैं। चौथा वाइड था ये, यानी ये ओवर हुआ 10 गेंदों का। इस ओवर में भी अच्छे 17 रन का ये ओवर अभी भी जारी है। ये अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लेंथ, ब्लॉकर में डालने की कोशिश, लेकिन जड़ से खेला बल्ले के। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति और 6 ओवर का ये निर्धारित कोटा खत्म होता हुआ पावर प्ले का। और स्कोर है स्कोरबोर्ड पर द वाटर रेगुलरली, क्योंकि हर एक खिलाड़ी के ऊपर ये प्रभाव गर्मी का दिखाई भी दे रहा है बॉडी लैंग्वेज पर। जब भी ये आपको पानी पीना है जरूर आप पानी मंगा सकते हैं, इनटेक द वाटर रेगुलरली। लेकिन 6 ओवर के बाद 78 रन, काफी बढ़िया पार्टनरशिप बन पे जितेश और अनिल के बीच, एक मजबूत आधार प्रदान करते हुए इस टीम को, टीम एफटीएल को बड़े टारगेट के लिए चलते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे कैसी मैच आगे बढ़ेगी, सुनते हैं अगली इनिंग की कहानी, मैच की कहानी आनंद स्टेट की जुबानी। ओवर टू आनंद। Good afternoon, everyone. Start of a new over, 79 without losing any wicket. That's a great start for the batting side. 6.1 overs already in the game. Quite foolish that delivery just outside the off stump. Once again, a wide delivery being signaled by the umpire. 80 without losing any wicket. Batting brilliantly. Anil, 44 of 23. This time, this is up in the air. There is a chance out there. Bowler is getting underneath, just out of reach of him. Good delivery that was. Trying to pay it on the onside. Just couldn't get the sweet part of the bat. Just luckily got out of reach of the bowler. Just a single. Coming back on strike, Jitesh Raut. This time a paddle sleep. Played nicely down to the fine leg region. There's a protection out here. Just a single. 82 on the board. 6.3 overs. The change of gloves for Anil Ronanki. 45 of 24. First over of his spell for Aryan Dalal. Last couple of overs in the power play. Quite expensive overs. Till then, they had kept the batsman quiet, but leaked some runs.
the last 2 overs of that power play. 82 on the board. Getting ready once again, Anil Ronanki. This time nicely bowled right in the block hole. Ducked in by the batsman. Played back to the bowler. Good fielding of his own bowling. 6.5 overs, 82 on the board. Couple of deliveries left in the 7th over. Inching closer towards the half-century mark. Flatter delivery. Wanted to slog it on the onside. Just played down to the long on region for a swingle. 46. Moves on to Anil. 46 of 26. 83 on the board. Already we have had 6 half centuries in this event. Today the 3rd day of the 14th season of Thane Premier League. 2 centuries already. Anish Chaudhary 103 of 36, and today Rudra Dhande 112 of 55. This time nicely bowled once again. Just on the off-stump corridor. Just a gentle push on the offside. Away to go for a quick single at the end of the 7th over. 84 on the board. Sohan to continue from the combox end. Prior to this, 1 over, none for 8. 84 on the board. Jitesh Raut on strike. Flatter delivery, wrapped on the pads, up goes the finger. First wicket down, that's what they needed. The breakthrough. Fall of the first wicket. New batsman coming in. Arun Yadav. 84 for 1. 7.1 over. Had a success in the first delivery itself of the second over of his spell. Sohan Talekar. 1.1 over. 1 for 8. We'll have that confidence going in now into those deliveries. Arun Yadav taking guard, just looking at the field. Flatter delivery just on the stumps. Quite a sharp turn on that delivery. Played nicely off the front foot. Back to the bowler. Still 4 deliveries to go in this over. Good comeback this after the power play.
Tossed up delivery a little bit. Just missed the stumps by a whisker. Lucky one, this one for Arun now. That's a bye. Going down to the final. Bowling that previous delivery just fogs the batsman as well as the wicket keeper. 88 on the board. Flatter once again played back to the bowler. Really good over this from Sohan Talekar. Not giving anything away to the batsman to work out. Just keeping it right on the stumps. 88 for 1. This is the 8th over of this inning. This time once again nicely bowled. Nicely played this by the batsman. Just played with an angle bat down to the short mid-wicket region. Good running this, good communication, solid intent from both the batsmen. Couple of runs, 90 on the board. Last delivery to go in the 8th over. Anil Ronanki at the non-striker end. 46 of 26. Nicely bowled once again. Just defended solely of the front foot, played back to the bowler. At the end of the 8th over, 90 on the board for the loss of 1 wicket. Aryan Dala to continue. From far end on strike, Anil Ronanki on 46. This is up in the air. Another chance. This down to the long off region, but just away from him, just above his head, and that's a half century of just 29. Kulekar and now Anil Ronanki. Once again, played down the ground. Quite much confident shot out of the ground. That's a monstrous hit. Showing his biceps. जबरदस्त सामने आणि या ठाणे प्रीमियर लीग पर्व 14च्या या आपल्या अनमोल क्षणी आज मान्यवरांचं आगमन झालेलं आहे.
आज या मुख्यश्रेणी आपल्याला उपस्थिती लाभलेले मान्यवर सन्माननीय राहुलजी लोंढे साहेब, शिवसेना प्रवक्ते, युवा सेना मुख्य सचिव आणि सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टचे विश्वस्त सन्माननीय राहुलजी लोंढे साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे. मी विनंती करीन की ठाणे प्रीमियर लीगच्या या पर्वामध्ये मान्यवर महाराष्ट्र माझा सेवा संस्था यांच्या वतीने करण्यात येईल. ते सुद्धा एक चांगले क्रिकेटपटू आहेत आणि वक्तृत्व हे त्यांचं मुख्य अस्त्र. सन्माननीय राहुलजी लोंढे साहेब यांचं स्वागत इथे होताना आपण पाहत आहात. धन्यवाद सन्माननीय राहुल लोंढे साहेब यांनी आज खेळाडूंच्या पाठीवर कौतुकाची थाप आपल्या उपस्थिती दिल्याबद्दल आपलं मनपूर्वक अभिनंदन. Going back to cricket. Good delivery this. Played on the front foot. Just a dab on the offside. Just a single. Ends over number 9. 112 on the board for the loss of 1 wicket. Chandani brought into the attack. Flatter delivery to start with. Wanted to show the face of the bat. Played down to the third man region. Luckily, no edge there. Dot delivery to start. Over number 10. Tossed up delivery. This is up in the air. At the long on region. Brilliantly held. Nice catch that one. Kept his eyes on the ball. And the second wicket down now.
New batsman coming in after the fall of the second wicket, Parth Chandan. (112) on the board for the loss of 2 wickets. Ishan to continue. Flatter delivery just outside the off stump, nicely driven down to the cover region. Just a single to open his account. Parth giving back the strike to Anil Ronanki, 67 of 31. Ishan just made his debut in the Vijay Hazare Trophy in Jan. Really been in good form. And being selected once again in the team Falcons in the Mumbai T20 League. Ishan Mulchandani just setting the field right for the left-handed batsman. Flatter on the stumps, good delivery this, just trying to play with an angled bat. Just an inside edge, lucky though, not ricocheted onto the stumps. 2 deliveries left in the 10th over, 113 on the board. Ishan to continue. This time swivel across, helped it nicely down to the deep fine leg region. One bounce over the ropes, brilliant hit this time. Score quickly moves on to 117 on the board. Anil Ronanki moves on to 70s, 71 of 33. Flatter won this on the stumps. Good comeback. This from Ishan after that leg side delivery. At the end of the 10th over, 118 on the board for the loss of 2 wickets. Still 10 overs to go into this inning. The 14th season of Thane Premier League, famously known as Upa Mukhyamantri Chashak. What an occasion, what a platform this has been all those years. Under the guidance of the main anchor of this ship has always been respected Mr. Vikasji Repale sir, a corporator and an Apex Council member of Mumbai Cricket Association. Under the guidance of our Deputy Chief Minister, respected Shri Eknathji Shinde sir. What a platform this is turning out to be for all the young gun cricketers out there. From the far end, it will be Yasin Sheikh into the attack. Prior to this, 1 over, none for 16. Touch expensive in that over. Definitely like to come back into the contest. Flatter wants to start with. Goes down to the fine leg region. Brilliantly fielded by the fielder. We'll wait for the umpire signal. Leg by the signal is. Just hits the pad on this way. 119 on the board. 119 for 2. Parth Chandan back on strike. A little bit tossed off delivery, that one than the previous one. Played nicely, pushed it down to the long off region. Good bowling this. Not giving away any easy runs to the batsman. Yasin Sheikh to continue. Left arm. Round the wicket. Full toss delivery on the pads. Helped it along down to the deep square leg region. Didn't get the sweet part of the bat. Didn't get that timing right. Just a single. Good fielding though from the fielder at the square leg region. Just a single. 121 on the board. Good delivery this. That one just punched it off the front foot up and above the cover region for a boundary. Really good hit that one. Good timing on that delivery. Waited for that ball to come and a good thumb shot over the cover region.
on the board. Flatter one this time, once again front foot drive. Back to the sweeper, backward point, good fielding though, but good piece of running. Good positive intent shown by both the batters out there in the middle. 127 now on the board. Last delivery left in the 11th over. Good delivery this one, angling in after pitching. Solidly defended off the front foot, back to the bowler at the end of the 11th over. 127 on the board for the loss of 2 wickets. Eleventh over, 127 on the board. Ishan to continue. Brilliant delivery that one. Drawing the batsman forward. Wanted to up the ante, played down the ground. No connection with the bat. Anil Ronanki, 73 of 37. Good delivery once again. Just opening the face of the bat at the last moment. Going down to the third man region. Good fielding that. Chased it down. Showed some football skills and kept the batsman for a couple of runs. 129 on the board. 129 for 2. 75 of 38 now. Anil. Par Chandan. 8 of just 5 deliveries has just come in. This time wanted to slog it on the onside. Brilliant delivery once again. Just on a sort of good length area, just spinning away from the left-hander. This is up in the air. There is a chance. Just, I believe, misjudged it at the first moment itself. Should have run straight towards the catch. Went couple of steps on the left side. Couldn't judge it. Yes, definitely. There was a chance. A single nevertheless. Just as we say, luck favors the brave. That's what is happening with Anil Ronanki. 130 on the board. Bowling well, Ishan Mulchandani. Still 2 deliveries left in this second over of his spell. Short of length delivery. Wanted to cash in. Takes the bottom part of the bat, goes down to the short square leg region, just a single. Good piece of bowling this, keeping it tighter and tighter in this over. Just 4 runs of 5 deliveries. Already had 1 success in the previous over. 131 for 2. Once again back on strike, Anil Ronanki. This time, once again, a good bowling this. Quite foolish that delivery. Good decision not to go for that run from Anil. Dot delivery to end over number 1231 on the board for the loss of 2 wickets. Still 8 overs left now. 48 deliveries to go to decide the fate of this inning. Anil Ronanki just closing it to the magical 3-figure mark. Definitely change of gloves, and we'll see change of in the commentary box as well. The next voice, the voice of Thane, Pradeep Desai, Bunty sir on the mic. Thank you.
ओह अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी अंदर भी आई, लेकिन पहले से तय कर लिया था कि ये बिग ड्राइव के लिए जाएंगे। आपका अप्रोच कैसा है इसके ऊपर? T20 फॉर्मेट जो ताबड़तोड़ फॉर्मेट कहा जाता है क्रिकेट की परिभाषा में, दोनों बल्लेबाजों ने तय किया है कि जब आपके पास अच्छे रन स्कोरबोर्ड पर लगे हो और आपके हाथों में विकेट इन हैंड है, तो फिर अब ये स्कोर को डबल करने की बारी आई है। फार एंड से स्पिन आक्रमण जारी रहता हुआ अनिल सामना करेंगे। ये हवा में पैडल स्लॉग हिट है, बड़ा सिरा लगा है और अंपायर का इशारा, ये गेंद दर्शक दीर्घा में डिपॉजिट कर दी है। मैंने प्यार तुम्हें अनिल जो सलामी बल्लेबाजी के तौर पर मैदान में उतरे, बहुत बढ़िया ढंग से अपनी इनिंग को आगे बढ़ाया इन्होंने। ये देखिए हर गेंद पर बल्ला चला रहे। 83 पर नॉट आउट की इनिंग अभी तक इनकी बहुत ही बढ़िया। संयम और आक्रमण ये दोनों रूप उन्होंने दिखाया। खराब गेंद को उन्होंने बख्शा नहीं, अच्छा गेंद को देखिए उन्होंने सम्मान भी दिया। स्कोर है स्कोरबोर्ड पर 139। इस बार ये अच्छा डिफेंसिव पुश, कवर क्षेत्र में हल्के हाथों से खेला था, 1 रन जरूर मिलेगा। 140 रन स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ। 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि हालांकि ये 13 ओवर जारी है और 7 ओवर बचे हैं शेष है इस इनिंग में। ये देखिए अच्छा फ्लिक इन एयर, लेकिन काफी आगे गिरते हुआ लॉन्ग ऑन के, लेकिन अच्छा किया, कीप द बॉडी बिहाइंड द बॉल। गेंद को पहले रोका, कैच का प्रयास नहीं किया। 2 रन जरूर मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने और स्कोर को भी आगे बढ़ाया। 142 रन। अनिल इनका जो आक्रामक रवैया उन्होंने अपनाया है उस पर भी वो बरकरार है, अपनी इनिंग की अहमियत को जानते हैं और लगता है आपको रिलैक्स होंगे नहीं, क्योंकि काफी गर्म वातावरण है। ये पैडल स्वीप करना चाहते थे, अंदरूनी करा, लगता है अंपायर का इशारा, ये एलबीडब्ल्यू का जो अपील था उसको मंजूरी देते हुए और एक बेहतरीन इनिंग अनिल की यहां पर समाप्त होती हुई। थकावट उनके चेहरे पर नजर भी आ रही थी, जरूर काफी लंबे इनिंग खेले उन्होंने। 83 रन की बहुत 83 देखते कितनी टोटल स्कोर है उनके नाम पर। तेरह जारी है और ड्रिंक्स मैदान पर बार बार जा रहा है, क्योंकि 13 ओवर का खेल समाप्त। 142 रन 3 विकेट पर। 2:45 बजे घड़ी में ये समय काफी उष्ण वातावरण का है, बहुत ही ये हॉट क्लाइमेट है और ऐसे वक्त पे अपने आपको सजग रहना, सचेत रहना, ये बहुत ही कठिन काम है और थकावट महसूस हुई अनिल को जरूर। काफी लंबी इनिंग इन्होंने खेली, 45 गेंदों में शानदार 85 रन की वो इनकी इनिंग। 14 ओवर जारी हो। ये पहले ही गेंद काफी बदलाव के तौर पर तेज डाली थी, ऑप्शन के बाहर को भी रखा टप्पा और बल्लेबाज विकेट के लिए जाना चाहते थे। स्विंग एंड मिस भी देखने मिला, प्ले एंड मिस। फिर एक बार ये गेंद,
इस बार अच्छे ढंग से खेल दिया, बैक टू द बॉलर, बहुत बेहतरीन अपने फॉलो थ्रू में डाइविंग इम्पैक्ट देखने मिला। ये जो समर्पण की भावना होती है, 100% देने की जो भावना है, इससे ही तो मैच बनती है। ब्रेक थ्रू चाहिए था, वो मिला पिछले ओवर में। थोड़ा रिलैक्स महसूस करती होगी टीम फील्डिंग यूनिट। ये बल्ले के जड़ से स्ट्रोक को खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, डाउन द ग्राउंड, सिंगल इज देयर, इजीली टेकन बाय द बोथ द बैटर। ये लक्ष्य क्या निर्धारित करेगी टीम? क्या 200 के ऊपर जाएगी, 225, 230 का आंकड़ा छू पाएगी? ये लक्ष्य जरूर उनके दिमाग में ही घूमता होगा। लेफ्ट हैंडर बैटर, न्यू बैटर यतीन मड़वी, लेफ्ट हैंडर को लेफ्ट हैंडर के लिए रिप्लेस किया है। यह पहला ही, कब गेंद को देखा, कब गेंद को परखा, जो बल्ला चला वो ऐसा चला का मानो तूफान आया हो। बहुत बड़ा लंबा सिक्सर। यतीन मड़वी पहली गेंद का सामना कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगा कि डगआउट से ही सेट हो गए आए हैं। टप्पा कहा था, शॉट ऑफ गुड लेंथ, और वो पिकअप शॉट क्रॉस बॉटेड ऑन दी अप, हाई एंड हैंडसम सिक्सर। क्या कमाल का ये स्ट्रोक था। इस बार उड़ाए गेंद को, और ये गेंद चली जाएगी फिर एक बार मिड ऑफ का क्षेत्र लांघती हुई, बैक टू बैक दूसरा सिक्सर। काफी जबरदस्त पावरफुल हिटिंग यहां पर देखने मिल रही है। यतीन मड़वी इस बार बल्ले का मुंह खोला, गाइड किया गेंद को, और वहां पर पहले अटेम्प्ट में अच्छा क्षेत्ररक्षण नजर नहीं आया। एक रन को 2 रन में तब्दील करते नजर आए दो बल्लेबाज यतीन। 3 गेंदों में इन्होंने 14 रन बनाए हैं। 14 ओवर का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ, और स्कोर बोर्ड मानो इनको पंख लगे हैं। 157 3 विकेट पर, काफी तेज गति से रन बने हैं, और बल्लेबाजों ने आते ही उनके अंदर की मनीषा को भी बताया है कि आने वाले 5 ओवर में हम बड़े स्कोर की ओर अग्रसर हो रहे जाएंगे जरूर। और दैट इज अ रियली गुड पॉजिटिव एटीट्यूड यू वांट टू से। 157 3 विकेट पर, 157 3 विकेट पर, और 5 ओवर का खेल शेष है। 6 ओवर का खेल शेष है, 14 ओवर हो चुके हैं। अब 36 गेंदों में लगता है अगर ये स्कोर बड़ा हो गया तो कम से कम ये 250 की तरफ कदम बढ़ाएंगे। और यतीन मड़वी जैसा आक्रामक बल्लेबाज जब आपके पास मैदान पर इतनी बढ़िया इनिंग को आगे बढ़ा रहा हो, तो ये लक्ष्य नजर के सामने दिख रहा है। उनका बखूबी साथ निभाते हुए राइट हैंडर बैटर पार्थ चंदन, काफी सितारों से सजी हुई टीम है। FTL फर्स्ट ट्रैक लॉजिस्टिक। ये पहला ही शॉट हवा में, ओहो क्या प्रयास किया था। डाइविंग इंपैक्ट, 4 रन जरूर मिले, लेकिन प्रयास के लिए 100 में से 100 मार्क देने पड़ेंगे। हवा में ऐसी छलांग लगाई मानो पक्षी तैर रहे हैं, पंछी। क्या छलांग थी है। अगर ये कैच कंप्लीट होता तो ये टूर्नामेंट का बेहतरीन कैच में शुमार होता है इसका। देखिए क्या डाइविंग इंपैक्ट है, कमाल का स्ट्रोक था। हवा में जरूर था, लेकिन देखिए फील्डर देखिए मानो गोता लगा रहे हो।
ये इस बार हवा में ही खेल दिया, स्टैंड एंड डिलीवर्ड, लेकिन वहां पर क्षेत्ररक्षक गेंद को कट करते, थ्रो करते। 2 रन। दोनों ओर से आक्रमण हो रहा है। हर गेंदबाज का खासा समाचार ले रहे दोनों बल्लेबाज। एक बाजू से लेफ्टी बैटर, एक बाजू से राइटी बैटर, दोनों ओर से तूफानी हल्ला हो रहा है गेंदबाजों के ऊपर। दक्ष फारेंड से तेज आक्रमण जारी रखते हुए दक्ष। इस बार कमाल का यह स्ट्रोक है। व्हाट अ शॉट, दैट इज ब्रिलियंट, मार्वलस, एक्सेलेंट शॉट। बल्लेबाज का क्लास बताता हुआ। गेंद खराब नहीं थी, लेकिन बल्लेबाज का क्लास उसके ऊपर था। थ्रू द लाइन खेले, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेले और पावर जनरेट की, और जो गैप था, जो दरिया था, उसको लांग कर गेंद गई स्वीपर कवर के बाहर 4 रनों के लिए। T20 फॉर्मेट में ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए तो दर्शक आते हैं देखने, और जो दर्शक यूट्यूब के माध्यम से CricLive.in के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं इस मैच को, घर बैठे आनंद ले रहे हैं। ठाणे जिले का क्रिकेट का टैलेंट को आप देख रहे हैं। इस बार हल्के हाथों से पुश किया, फॉलो थ्रू में ठीक से रोक नहीं पाए, लेकिन बल्लेबाज नहीं रुकेंगे। 1 रन जरूर मिलेगा। 168 रन, जबकि ये 15वां ओवर ही जारी है, और बल्लेबाज हर ओवर को बड़ा बनाना है, इसी मूड से खेल रहे हैं। हर ओवर को उनको बड़ा बनाना है। यतीन मड़वी स्ट्राइक पर देख रहे हैं आप, जिन्होंने 3 गेंदों में 14 रन बना डाले हैं और अपने इरादे जाहिर किए हैं, मैं रुकूंगा नहीं। राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन वैसे सरदर्द होता है कैप्टन का, लेकिन गेंदबाजों का सरदर्द बने हुए दोनों बखूबी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार क्रॉस बैटेड ऑन द अप, और ये तो बल्ले के ऊपरी सिरे से लगकर गई गेंद। 6 रन के लिए डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से। मानो अब बरसात हो रही है छक्कों की, सिक्सरों की। चारों ओर रंगोली डाली जा रही है मैदान के बल्लेबाजों द्वारा। आज की खासियत यह है कितनी सहजता के साथ वो स्ट्रोक को खेल रहे हैं, कोई कठिनाई नहीं है उनको। हर गेंद को बारीकी से देख भी रहे हैं, माप तोल रहे हैं। 4 गेंदों में 20 रन, 500 का स्ट्राइक रेट। ये अच्छी गेंद कहा जाना चाहिए। बाउंस मिला, दक्ष के पास वो क्षमता है गेंद को पटक कर उठाने की। कमबैक तो किया है, लेकिन उन्होंने वो गेंद डाली जिससे रन नहीं बने। आखिरी गेंद डॉट के रूप में आई। स्कोर है स्कोरबोर्ड पर 174 रन। 5 ओवर का खेल शेष, 15 ओवर के बाद 174, 3 विकेट पर। काफी गर्म वातावरण है दोस्तों, काफी गर्म वातावरण है, काफी हॉट क्लाइमेट है, लेकिन ऊपर सूरज आग उगलता हुआ। यहां पर दोनों बल्लेबाजों के बल्ले आग उगलते हुए देखते हैं 5 ओवर में क्या होगा नहीं होगा। ये स्कोर जो बहाव बह रहा है, इसको रोक लगाने में क्या गेंदबाजी करने वाली टीम सुलक्षण कुलकर्णी क्रिकेट एकेडमी के गेंदबाज सफल हो पाएंगे, ब्रेक थ्रू मिलेगा नहीं। सुनते हैं अब आगे 5 ओवर की कहानी। फिर एक बार आनंद श्रेष्ठ की जुबानी। ओ टू आनंद। Thank you, sir. Start of a new over. The intentions are pretty clear from the batsman.
They're going for it. They're going for the kill. Good fielding this. Just couple of runs added to the score. 2 runs being added. Couple of runs saved by the fielder at the cow corner. 176. Oh, what a catch. That's a stunner on his follow through. It was ferociously hit back at the bowler. Parth will have to go back in the dugout. Outstanding catch from Sohan Talekar. विकास तू मेरे सामने मैं तेरे सामने तुझको देखूं के प्यार करूं Make it drop तू मेरे सामने मैं तेरे सामने तुझको देखूं के प्यार करूं जैसे हो गया तू मेरी हो गई जैसे मैं एतबार करूं तू मेरे सामने टूट गई टूट के मैं चूर हो गई Nicely bowled. Quite foolish that delivery played. Like struck our region. Good fielding though from the long off fielder. Just chase it down. Couple of runs being added to the total. Opens his account with those couple of runs. Vinay. 178 on the board. What a catch it was from Sohan Talekar to dismiss Parth of his own bowling. Nicely bowled this time. Just played with an angled bat. Just a single on the offside. 2 deliveries to go. Yatin Madhvi back on strike. 20 of just 5 deliveries. Batting at a strike rate of 400. Really good class act apart. 179 on the board. Just looking at the field. Just a little bit of air. No ball being signaled by the umpire. Was really close, I would say. Hadn't that been a no ball, it would have been really close. It was hit on the toes. A single taken. Couple of runs will be added. Free hit delivery coming up. Vinay Kumar will be on strike. Doesn't need any invitation, but a free hit delivery coming up. 181 for 4. Sohan to continue. That was right in the arc. Brilliantly paid down to the cow corner. 1 bounce over the ropes. Just a little bit foolish delivery. Nicely driven down to the cover region.
Going for the second run. Good fielding once again. Couple of runs added to the score at the end of the 16th over. 187 on the board for the loss of 4 wickets. Ishan Mulchandani to continue from the far end. 3 overs prior to this from the Combox end. Flatter this time. This is up in the air. Going down to the cow corner region. There is a fielder out there, but just ball watching. A maximum once again. Brilliant hitting this from Yasin Murphy. Three on the board. Nothing wrong with that delivery, but what a pickup shot it was. Once again, it is up in the air, down to the long on region, just above the head, back-to-back sixes. 199 on the board. Yatin Murphy moves on to 32. Up till now has come of 18 deliveries in this season. 32 of 9 right now, Yatin Madhvi. 32 of 8 right now with 5 sixes. Stopped and bowled, watched till the last moment. Brilliant fielding of his own bowling. Good delivery that one. Good comeback by Ishan. 3 deliveries still to go. 199 on the board. The projected score 241. 12.06 runs per over. Shot of length delivery. Flashed it hard. Down to the long off region. Oh, spilled at the last moment. Would have been a good catch. Good effort from the fielder. Reached there, got both the hands, but then hold on to it till the last moment. 200 up, 200 for 4. 2 deliveries left. Ishan Mulchandani to continue from the far end. Shot of length delivery on the pads, flicked it around down to the deep square leg region. Good timing on that shot. Couple of runs quite easily taken by the batters. 202 on the board. Last delivery to go in the 17th over. The fastest half century in this format we saw Yuvraj Singh in the 2007 T20 World Cup. Of 12 deliveries this time, nicely played on the pads once again, nicely flicked, going for the second run. Brilliant running this, good communication between both the batters. At the end of the 17th over, 204 on the board.
204 for 4 at the end of the 17th over. Back on strike, Yatin Madhvi. This time, slogged it, played down nicely down to the cow corner region. Good fielding this. Just a single. Good pick up, good throw down to the bowler's end. Just a single. 205 on the board. Sohan Talekar to continue from the com box and 3.1 over. 23 for 2 wickets. Quite fuller that delivery. Nicely played down the ground, down to the long off region. Good start this for Sohan Talekar. Last over of his spell. Couple of runs. Yatin Madhvi, 34 of 11 deliveries. Batting at a strike rate of about 300. 5 huge sixes included in it. Goes down the track. Good delivery this. Slowed up a little bit, I believe. He knew that Yatin would be charging him up. Has a little smile on his face. Sohan Talekar. 3 deliveries done. And dusted. 3 deliveries to go in the 18th over. Vinay Kuwar on strike. 14 of just 7 deliveries. Nicely bowled once again. Played back to the bowler. Really good stuff this from Sohan. Mixing up the deliveries, keeping some deliveries foolish, keeping some deliveries on the good length area. This one, a good one, tossed up delivery. Played down the ground. Good fielding though. Just a single once again. Puts Yatin Madhvi back on strike. 208 on the board. Current run rate 11.66. Flattered delivery. This is up in the air. This is going down to the cow corner region. There is a chance. And oh, collision once again. Confusion between both the batters. And once again, a drop chance. Not at all happy with that effort, Sohan Talekar. But a single being taken at the end of the 18th over. 209 on the board for the loss of 4 wickets. Wonderful contest this going on between SKCAS and FTL XI team. The end of the 18th over. Huh? 209 on the board. Going great guns out there in the middle, both the batsmen. Yatin Madhvi batting on 36 of 13 deliveries. With the ball in his hand from the far end. Daksh Sharma to continue. 2 overs left. Short of length delivery. Good delivery. That's really steep bouncer. That's known as a perfume delivery. Must have smelled the white ball on its way. Good delivery. What a contest we are encountering. 11 deliveries to go. 209 on the board. 209 for 4. 11 deliveries to go. Good start this from Daksh Sharma. Prior to this, 3 overs, none for 42. This is the 14th edition and the second match in the third day's play of Thane Premier League.
This time, once again, that shot played down nicely down to the long off region. Good fielding though. Wanted that second run, Yatin Madvi, but denied that by Vinay. Keeping the strike back. Vinay Kuwar will be on strike. 15 of just 9 deliveries. Trying to go big, those two batters. $210 for 4. Just looking at the field, taking his time out, Vinay. Good delivery, that one. Just angling in, nicely played. Just a flick of the wrist down to the deep square leg region. Going for that second run. Good running this. Good commitment shown from both the batsmen. 212 on the board. You're watching the 14th season of Thane Premier League, famously known as Upa Mukhyamantri Chashak 2026. The main anchor of this ship for all those years has always been respected Mr. Vikasji Repale sir, a corporator and an Apex Council member of Mumbai Cricket Association. Under the guidance of Deputy Chief Minister, respected Mr. Eknathji Shinde sir. What a grand opening we had day before yesterday. Next delivery. Short of length delivery, didn't rise at all. Couldn't time it where it wanted. Wanted to play it on the onside. Going to mid-off, just a single. 213 on the board. 2 deliveries to go in the penultimate over of this inning. Good over this from Daksh Sharma, keeping it tighter. Just 4 runs of 4 deliveries. Back on strike, Yatin Madvi, 37 of 15. Short of length delivery, once again a brilliant ball. This second for the over. That's what the signal is. Once again a perfume delivery. That was absolute corker. Quite pacey stuff, we can see. Daksh Sharma in action. Good prospect. Good run up. High action. Good release. 213 on the board. Last delivery of his spell. Last delivery of the penultimate over. Just a slight discussion between the bowler and the fielder. Just bringing in the deep square leg fielder inside the 30-yard circle. See a long off, a long on, a deep backward point. Short of length delivery, this is up in the air. There is an opportunity here for the wicketkeeper. Nicely held, brilliant bowling this from Daksh Sharma. 5th wicket down at the end of the 19th over.
All the last over of this inning, 213 for 5. It's Harsh Makharia. At the striker end, it will be Vinay Kumar. Full toss delivery to start with, pacey stuff, a full toss. Wide ball signaled by the umpire, throw at the striker end. There is no one backing up, couple of runs been stolen over there. Wide and couple of runs, 3 runs to be added to the total. 216 on the board. A wayward start from Harsh Makharia. Prior to this, 2 overs, none for 23. 216. We'll have to keep somewhere in between 225, 230. Full toss once again, wide slash, going down to the backward point region. There is a fielder out there. Throw is coming at the non-striker end. Good fielding, just a single. 217 for 5. New batsman coming in, Arjun Thapa will be on strike. Last 5 deliveries. Just getting the field right. Harsh on action. Next delivery. Good delivery this. Just coming in with the angle on a sort of good length area. Just rising in. Just puts solidly off the front foot down to the backward point region. Just a single, bringing back Vinay Kumar on strike. 218 for 5. Last 4 deliveries. Just a change of bats for Vinay. Believe we'll use some lighter one to wield his willow. Last 4 deliveries. 218. Those viewers just joined us. Very good afternoon. We're live from Dadoji Kontev Stadium, Thane. This is the 3rd day, 2nd contest on the card. 14th season of Thane Premier League. Nicely bowled right in the block hole. Nicely dug in down the ground, down to the long off region. Good delivery that one. Very low full toss. Just inches closer of a Yorker. 219 for 5. Back on strike, Arjun Thapa. This time a waiver delivery. Trying to bowl with more pace. Down the leg side. 220 for 5. 220. A mammoth total on the cards now. We'll have to really bat well. The second batting team. Nicely bowled, takes the outside edge, going down to the 3rd man region for a boundary. Good delivery that was. Four for 5. Couple of deliveries left in this inning. Hasn't gone their way. Won the toss. SKCAS team electing to field first. 224. Couple of deliveries left. Nicely bowled this time. Once again, quite foolish that delivery. Takes the lower part of the bat, going down to the cow corner region. Single once again. 225. What a day this has been. We have seen another centurion today in the previous match. Rudra Dhande, 112 of 55 deliveries. Yesterday we saw Anish Chaudhary, 100 of just 34 deliveries. And today Rudra Dhande,
48 deliveries he took for his century. Just a wayward delivery down the leg side. Once again a wide delivery. Too many extras in his spell. Harsh Makharia. 2.5 overs, none for 36. 226 for 5. Once again, a last delivery. Bringing that deep square leg fielder inside the 30-yard circle and getting that backward point fielder at a deep position. Low full toss, played down to the cow corner region. They're going for the second throw. Is coming at the striker end. Just away from the stumps. Good work from the wicket keeper. Will wait for the umpire's signal. No signal from the umpire. That means couple of runs will be added to the score line. So at the end of the stipulated 20 overs, 228 on the board from team FTL. And once we resume after the break, it will be team Sulakshan Kulkarni Cricket Academy will have to chase 229. We'll be back in a short while.
सामन्याची सुरुवात होते. पुन्हा एकदा क्रीडा रसिकांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. ठाणे प्रीमियर लीग पर्व 14व सुरू आहे आणि दुपारच्या सत्रातला सामना टीम FTL विरुद्ध सुलक्षण कुलकर्णी क्रिकेट अकॅडमी या दोन संघांमधील ही लढत आपण पाहताय. या संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं होतं आणि एक मिनिट दोन्ही संघांचा एकही खेळाडू नाही आहे. अतिरिक्त खेळाडू प्लीज कृपया पाठवा. पहिला चेंडू पडायच्या आतमध्ये, कारण त्यानंतर आपल्या खेळाडूंची नावं कळायला फार दिक्कत होते. येस एम्पायर. इम्पॅक्ट प्लेयर कोण आहे? सुलक्षण कुलकर्णी क्रिकेट अकॅडमी टीम आपला अतिरिक्त खेळाडू कृपया कर्णधार आपण पाठवावा प्लीज. पहिला चेंडू उजव्या टीच्या बाहेर, पंचांचा इशारा येतोय. अवांतर चेंडू आहे. सुरुवात अवांतर वाईड चेंडूने. सोहम आणि श्रेयस सलामीची जोडी. यावेळी सोहम बॅकफुटला जाऊन जागा बनवतोय आणि फार सुंदर हा फटका सजवलाय. बरोबर पॉइंटच्या बाजूनी त्याला काढलंय. वाईडिश पॉइंट. नवीन शर्मा गोलंदाजीच्या मार्कवर आपण पाहतायत. स्पिन आक्रमण कॉमेंट्री बॉक्सकडनं नवीन शर्मा यांच्या रूपाने आपण पाहतोय. यावेळी फ्रंट फुटला आहेत. ऑन ड्राईव्ह केलाय. लॉंग ऑनच्या क्षेत्रामध्ये एक धाव निश्चित. 229 धावांचं विशाल लक्ष्याचा पाठलाग करतोय सुलक्षण कुलकर्णी क्रिकेट अकॅडमीचा संघ. इम्पॅक्ट प्लेयर श्रेयस डावखुरा फलंदाज स्ट्राईक एंडला प्रथम सामोरं जातोय. नवीन शर्मांच्या पुढील चेंडूला पॉवर प्लेचं पहिलं षटक मार्गस्थ आहे. यावेळी अपील करण्यात आले जोरदार, पण इम्पॅक्ट कुठे ते पाहावं लागेल. पहिल्यांदा बीट केलंय. थोडी फ्लॅटर वन डिलिव्हरी. फ्रंट फुटला खेळण्याचा प्रयत्नात पॅडवर चेंडू आदळतोय. नवीन शर्मा एक हसतमुख व्यक्तिमत्व आहे. टीम FTL चे नवीन शर्मा. पुढे येऊन पुढे सरसावत ऑन ड्राईव्ह. परफेक्ट ड्राईव्ह. खाली क्षेत्र आहे. ब्रेक साईडला 4 धावा. यावेळी फ्रंट फुट पुश, डिफेन्सिव्ह पुश विदाउट एनी रन. निर्धाव चेंडू येतो. धावसंख्या धापलकावर जर आपण पाहिली 10 धावा. यावेळी जागेवरूनच बिगिट करण्याचा प्रयत्न.
चेंडूच्या रेषेमध्ये न येता कम्प्लिटली मिस, प्ले अँड मिस पाहायला मिळतंय. निर्धाव चेंडूने हे षटक समाप्त केलं, सांगता केली आहे षटकाची. निर्धाव चेंडूने धावसंख्या 10 बिनबाद 10. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 229 धावांचा पाठलाग करताना सुलक्षण कुलकर्णी क्रिकेट अकॅडमीचा हा संघ ठाणा प्रीमियर लीग उपमुख्यमंत्री चषक 2026 क्रिकेट वर्तुळामध्ये ज्याला TPL म्हणून ओळखलं जातं ते पर्व 14व. ठाणे जिल्ह्यातील क्रिकेटपटूंच्या प्रतिभेला, कौशल्याला, टॅलेंटला वाव मिळावा यासाठी माननीय नगरसेवक विकासजी रेपाळे, अपेक्स काउन्सिल मेंबर ऑफ मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे यांनी जी संकल्पना मांडली आणि त्यावर काम केलं गेलं. गेली 13 वर्ष सातत्य राखले या स्पर्धेने. यावेळी 14व्या वर्षात अभिमानाने पदार्पण करताना अनेक क्रिकेटपटूंना मोठ्या ठिकाणी जाण्यास वाव मिळाला आहे. मुंबई रणजी संघाची दारं ठोठवली गेली आहेत. MPL मध्ये बरेच खेळाडू इथले खेळताना आपण पाहिले. काल ज्या ऑप्शनमध्ये आपण पाहिलं, दरम्यान फॉरेनकडनं प्रेम मारा सुरू ठेवतोय. पहिला चेंडू जबरदस्त टप्पा पडल्यावर चेंडूने उसळी घेतोय. टेक ऑफ डिलिव्हरी. फलंदाज तेवढं तत्परतेने बरोबर चेंडूच्या मागे येतोय आणि प्रॉपर खेळून काढतोय. निर्धाव चेंडू. दोन्ही बाजूने मध्यम गती तेज आक्रमण FTL संघाचं मार्गस्थ आहे. समोरीलकडनं फ्रेम. यावेळी मनगड्याच्या जवळ चेंडूला वळवलंय. पायपंचांच्या बाजूने एकदा आरामात पूर्ण केले. तिकडे प्रोटेक्शन आहे. गस्त घालतोय खेळाडू. टियाळणी करतोय. एकच धाव मिळेल. रायटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन मैदानात आपण पाहतोय. दरम्यान डावखोरा फलंदाज श्रेयस सामोरं जातोय प्रेमच्या पुढील चेंडूला. यावेळी परफेक्ट डिफेन्सिव्ह पुश बॅक टू द बॉलर. चांगल्या टप्प्याचा चेंडू मधल्या आणि उजव्या यष्टीवरचा. फलंदाजांनी पहिल्या चेंडूला पाहिलं. मेरिट अनुसार चेंडूला खेळून काढले. सन्मान देताना दिसला चेंडूला. रक्षात्मक पद्धतीने खेळतोय चेंडू. निर्धाव. श्रेयस इम्पॅक्ट प्लेअर आहे. इम्पॅक्ट प्लेअरचा अर्थ त्यांना माहिती आहे आपली उपयुक्तता काय. हो, लेगस्टंपच्या बाहेर आहे. पंचांनी इशारा केलाय. अवांतर चेंडू वाढी स्वरूपात. हा चेंडू पुन्हा टाकावाच लागेल. अतिरिक्त धावसंख्येत एका धावेची भरी पडते. धावफलक हलकासा पुढे सरकतोय. 12 धावा. बिनबाद 12. वेग चांगला आहे आपल्याकडे, पण टप्पा दिशा, नियंत्रण, ॲक्युरेसी आणि त्यामध्ये अनुशासन. दरम्यान गोलंदाज फॉरेनकडनं मार्गस्थ होतोय. यावेळी लॉफ्ट केला हवेमध्ये. क्षेत्ररक्षक चांगलाच येतोय. चेंडू खाली ऑन द रन. ब्रिलियंट टेक बाय द फिल्डर. आणि पहिला धक्का, पहिला हादरा इथे सुलक्षण कुलकर्णी क्रिकेट अकॅडमी संघाला. बॅटर बॅक टू द ग्राउंड.
पहिला धक्का आपण पाहता लागलेला, थोडा ऑन दी अप खेळण्याचा प्रयत्न. जी धावगती आपल्याला पाहिजे, कमीत कमी 11.5 धावांची धावगती मेंटेन ठेवायची होती आणि त्या अनुसारच खेळण्याचा प्रयत्न ऑन दी अप, आणि त्यामध्ये टायमिंग मिस होत आहे, एलिव्हेशन मिळालं नाही, त्यामुळे हा झेल आणि झेलही चांगला टिपला गेला. क्षेत्ररक्षक तिथे होते, उंची जास्त होती, रुंदी कमी होती आणि त्यामुळे हा झेल आरामात टिपला गेला. पण प्रत्येक झेल हा महत्त्वाचा असतो, तो कंप्लीट केल्यावरच त्याला झेल म्हटलं जातं आणि कॅच कंप्लीट केली गेली. प्रेमला यश मिळते, फॉरेनकडनं मारा करतोय, वेग चांगला आहे, टप्पा दिशाही चांगली राखली आतापर्यंत. शॉर्ट ऑफ गुडलिन थोडं चेंडूला उसळी पण त्याच्या मिळते. एक स्लिप तैनात करण्यात आली आहे. नवीन शर्मा यांचा संघ फर्स्ट ट्रॅक लॉजिस्टिक, गेल्या वर्षीचा रनरअप. दरम्यान हा चेंडू, ओ वेल बॉल, चांगला चेंडू, नाईस स्केल ऑफ डिलिव्हरी. उजव्या अष्टीवर वेगाने चेंडू निघतोय. फलंदाजाने पहिले अष्टे कव्हर केला, पाहिलं चेंडू उजवटीच्या बाहेर आहे, खेळण्याचा बिलकुल प्रयत्न केला नाही, चेंडू सोडून दिला. यष्टिरक्षक आपली कामगिरी पार पाडतोय. निर्धाव चेंडू, ऑफ साईडला आपण पाहताय 6 खेळाडू, लेग साईडला 3 अशी व्यूहरचना. दरम्यान गोलंदाज आपल्या मार्कवर सज्ज होतोय. यावेळी परत एकदा ऑन द अप खेळलाय क्षेत्ररक्षक, यावेळी सुद्धा तैनात चेंडू खाली येतोय आणि हा दुसरा धक्का. दोन्ही फलंदाज थ्रू द लाईन खेळताना वाद झालेत. दोन्ही फलंदाज थ्रू द लाईन ऑन दी अप. तुम्ही चेंडू कव्हर करून जर डायरेक्ट खेळायला गेलात तर नक्कीच थ्रू म्हणजे चेंडू पडल्यावर, आणि त्यामुळे टायमिंग साध्य झालं नाही. दरम्यान चेंडूचा टप्पा पडल्यावर चेंडूच्या रेषेमध्ये दोन खेळणं हे तकनिकी दृष्टीने प्रॉपर असतं, परंतु तुम्ही जागेवरनंच तो चेंडू तटकवायला गेलात तर अशी चूक भूल होते. दरम्यान 2 धक्के लागोपाठ, त्यामुळे थोडा बॅकफुटला संघ दिसतोय. दुसरं षटक पूर्ण होतंय. तिसरा षटकाची सुरुवात परत एकदा नवीन शर्मा यांचं षटक आपण पाहतोय कॉमेंट्री बॉक्सकडनं. यावेळी जागा बनवली आहे, कट केला आहे, परंतु चांगलं दक्ष क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. प्लेस करू शकले नाही आहेत. यतीन मडवी ज्याची बॅट आग ओकत होती, आज तो क्षेत्ररक्षण करताना तेवढं चपळ त्याने चेंडू अडवताना दिसतोय. स्टारकास्ट टीम आहे, टीम FTL, अनुभवी खेळाडूंचा भरणा. यावेळी आखूट टप्पा, परत एकदा जागा बनवून खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडूला काही ठीकसा प्लेस करू शकत नाही आहेत.
यावेळी कट केलाय, चांगला अडवलाय चेंडूला. कीप द बॉडी बिहाइंड द बॉल. पण एक धाव काही रोखू शकत नाहीयेत. वेगवान फटका होता. अशा वेळी आपण नक्कीच शरीर पाठीमागे आणावं चेंडूच्या. त्याप्रमाणे तो अडवला गेला. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण पाहताय. कव्हर क्षेत्रामध्ये खेळाडू सजग आहेत, तत्पर आहेत. आता धावा येणं थोडं कठीण झालंय, कारण की पहिल्या षटकात 10 धावा होत्या. त्यानंतर दुसऱ्या षटकात 2 गडी बाद झाले. यावेळी पुश केलंय, धाव घेण्याचा प्रयत्न केला. पाहिलं वेगवान थ्रो आहे, बॅकअप सुद्धा आहे. चेंडूवर क्षेत्ररक्षक तुटून पडतोय. पाहिल्यावर आपला इरादा बदलला. पाय क्रीजमध्ये खेचतात फलंदाज. पण चांगला मारा पाहायला मिळतो दोन्ही बाजूने. एका बाजूने नवीन शर्मा यांच्या रूपाने स्पिन आक्रमण आणि फार एंडकडनं मध्यम गती तेज आक्रमण. यावेळी लेग साईडला लो फुलटॉस चेंडूला खेळून काढले. लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये डीप लॉंग ऑनला खेळाडू आहे तिथे. पॅट्रोलिंग करतोय, गस्त घालतोय. एकच धाव मिळेल. पॉवर प्लेचं तिसरं षटक मार्गस्थ आहे. 229 धावांचा विशाल लक्ष्याचा पाठलाग करते टीम. यावेळी प्लेच चांगले केले. क्षेत्ररक्षकाला चांगला अडवतोय, कट करतोय, थ्रो करतोय. एकच धाव मिळेल. गुडफिल्ड. 3 षटकांचा खेळ इथे समाप्त होतोय आणि धावफलक दर्शवतोय 15 धावा, 2 गडी बाद. 3 ओवर के पश्चात 15 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 229 रन का लक्ष्य का पीछा कर रही है सुलक्षण कुलकर्णी क्रिकेट एकेडमी की ये टीम FTL जो पीली जर्सी में नजर आ रही है. अभी तक पकड़ मजबूत बनाते हुए फिर से लगता है फार एंड से वही आक्रमण जारी रखा गया है. मध्यम गति तेज आक्रमण. प्रेम देवकर काफी अच्छी गेंदबाजी की. उन्होंने विकेट चटकाई, ब्रेक थ्रू दिलवाया अपने टीम के लिए. अच्छा लाइन और लेन पर बरकरार रहे प्रेम. गति भी उनकी बहुत बढ़िया है अपने बॉलिंग मार्ग से निकलते हुए. इस बार गेंद को उठा के खेला है कवर के ऊपर से. स्वीपर कवर की तरफ गेंद काफी तेजी के साथ निकलती हुई. खिलाड़ी गेंद का पीछा करेंगे लेकिन उसमें दौड़ जीतेगी गेंद और गेंद सीमा रेखा पार. 4 रन के लिए फरार. बार बार स्ट्रोक खेलना होगा. पावर प्ले का जितना भी उपयोग कर सके आपको करना होगा, क्योंकि 2 खिलाड़ी सिर्फ 30 गज दायरे के बाहर है. इस बार ऑन ड्राइव किया है लेकिन खिलाड़ी को पाया है और ये फंबल, मिस फील्डिंग और गेंद चली जाएगी सीमा रेखा पार. रन गति को बढ़ाना होगा. 229 रन का लक्ष्य है. कम से कम 11 रन प्रति ओवर के माध्यम से आपको रन तो बनाने होंगे. दरमियान इस बीच ये गेंद. इस बार ये परफेक्ट पुल शॉट है. जल्दी रीड किया था गेंद को और खेल दिया है. ये डीप मिड विकेट क्षेत्र से गेंद निकलती हुई 4 रन के लिए. बल्लेबाज ने जानते हैं मैच की अहमियत को, सिचुएशन को अच्छी तरह से पढ़ के खेल रहे.
जिस गेंदबाज ने 2 विकेट ली थी उसके ऊपर आक्रमण करने की भूमिका में अब बल्लेबाज, ये हवा में है और इस कैच को बेहतरीन तरीके से फिर एक बार पुल करना चाहते थे लेकिन उतना एलिवेशन नहीं मिला और बल्ले के ऊपरी सिरे से लगकर गेंद, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम और कैच लेकर, बहुत बेहतरीन कैच लेकर बल्लेबाज को वापसी का दौर अपनाया है। 3 ओवर चालू है। जल्दी जल्दी 3 विकेट गिरे हैं। एक मानसिक दबाव होता है, मेंटल प्रेशर, ये उस टारगेट का भी होता है जो आपको लक्ष्य का पीछा करना है। 229 का लक्ष्य पीछा करेंगे तो पावर प्ले का बखूबी से उपयोग आप करना चाहेंगे। ऐसे में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होती है लेकिन अगर ठीक बल्ले पे गेंद नहीं आई तो फिर चांसेस भी बनते हैं और यही चांसेस को बहुत अच्छी तरह से इन्होंने भुनाया भी है। जो सभी हाई कैच बेहतरीन तरीके से लिए गए हैं। ये अच्छी गेंद थी, खेल दिया था, तेज शॉट था, भारी सिरा लगा था, गली की दिशा में गेंद, उसको अच्छी तरह से फील्ड भी किया गया। आप अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करेंगे तो आपको फल मिलेगा विकेट के रूप में और यही यहां पर दिखाई देता हुआ। थोड़ी अजीब पकड़ मजबूत की है मैच के ऊपर टीम एफटीएल ने। सलामी जो टॉप ऑर्डर 3 ऑर्डर बैट्समैन थे उनको डगआउट में वापस भेजा है। गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर, इस बार बल्ले का मुंह खोला, गाइड किया गेंद को। 2 रन लेना चाहते हैं, आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल भी करेंगे। पहले अटेम्प्ट में ठीक से रोक नहीं पाए, इसके लिए दूसरा रन लेने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई। इसी के साथ तीसरा ओवर, ये भी एक सफल ओवर पूरा होता हुआ। चौथा में आप कीजिए, चौथा ओवर पूरा होता और स्कोर है स्कोरबोर्ड पर 29 रन। अब चाहिए बराबर 200 रन आने वाली 16 ओवर में। रन रेट बढ़ा है, वैसे भी तापमान भी बढ़ा है, रन रेट भी बढ़ा है। काफी बड़ी ये प्रतियोगिता है, सर्वात ही मोठी स्पर्धा आहे, कारण ठाणे जिल्हा क्रिकेटच्या खेळाडूंच्या कौशल्याला आणि त्यांच्या प्रतिभेला एक चांगलं व्यासपीठ यामुळे उपलब्ध होत आहे। गेली 13 वर्ष केलेला हा स्पर्धेचा प्रवास आता सफल होताना दिसतोय। चर्चा आहे या स्पर्धेची सन्मान्य नगरसेवक विकासजी रेपाळे यांच्या संकल्पनेतून साकारलेली ही स्पर्धा। दरम्यान नवीन शर्मा आपलं 30 षटक घेऊन येत आहेत। एवढी हलक्या हाताने चेंडूला खेळून काढले पण क्षेत्ररक्षक तिथे दक्ष आहे, सर्कलच्या आतमध्ये शॉर्ट टर्नमॅनच्या दिशेला धाव घेण्याचा बिलकुल प्रयत्न केला नाही आणि धाव चेंडू येतोय। यावेळी थोडा आखुट्ट्यामध्ये चेंडू जागा बनवून पूल केला, चांगला अडवलाय, 100 स्टॉप, एकच धाव मिळेल। क्षेत्ररक्षण चांगलंच उजव्या दर्जाचं आहे टीम एफटीएलचं। यावेळी 5वं षटक मार्गस्थ होताना आपण पाहतोय। 30 धावा धावफलकावर, 3 गडी बाद 30।
परत पाठवले फलंदाजाला, समोरीलकडे नकार आलाय. निर्धाव चेंडूवर निर्धाव चेंडू येत आहेत. मेंटली प्रेशर क्रिएट केलंय. पहिल्यांदाच 5वा षटक मार्गस्थ असताना धावसंख्येला आळा घातलाय, खीळ घातली आहे. 229 धावांचा पाठलाग होतोय, पण इथे क्षेत्ररक्षण टीम थोडं वर्चस्व स्थापित करते. यावेळी फ्रंटफूट पुश करताना बीट झालं, अपील केलं स्टंपिंगचं, जस्टिसचं, परंतु बॅटर इज सेफ, आपल्या क्रीजमध्ये सुरक्षित आहे. नवीन शर्मा चांगल्या टप्प्याने दिशावर गोलंदाजी करतायत, त्यामुळे फलंदाजांना वाव मिळत नाहीये. मोठे पडके खेळायचा, हात मोकळे करायचा, जागा देत नाहीयेत. दरम्यान नवीन शर्मा पुढील चेंडू घेऊन यावेळी पुन्हा स्ट्रोक केलाय, परंतु स्ट्रेट टुवर्ड द फिल्डर विदाउट एनी रन. 5 षटकांचा खेळ इथे समाप्त होतोय. धावसंख्या धाबलकावर दर्शवते ती 30. 3 गडी बाद 30. 199 धावा गरजेच्या आहेत येणाऱ्या 15 षटकांमध्ये, म्हणजे 90 चेंडू आणि बरोबर 199 धावा. प्रेमाच्या जागेवर अजय पाटीलला यावेळी तैनात करण्यात आले. लेगस्टंपच्या बाहेर आहे चेंडू. पंचांचा इशारा येतो, अवांतर चेंडू वाईट स्वरूपात. अतिरिक्त धावांनी सुरुवात केली आहे अजय पाटील. एक प्रतिभाशाली खेळाडू म्हणून त्याची ओळख आहे क्रिकेट जगतामध्ये. .229चं लक्ष्य आहे आणि अजय पाटील वैयक्तिक पहिलं संघाचं 6वं षटक घेऊन मार्गस्थ होताना दिसत आहेत. यावेळी लेग साईडला मणकरच्या जोरावर वळवलंय. क्षेत्ररक्षक अडवू शकेल का? निश्चित. चांगला कट करतोय, चेंडूला अडवतोय, थ्रो करतोय. 2 धावा फलंदाजीने आरामात पूर्ण केलेत. थोडा लेन जी आहे दिशा ती लेगस्टंपच्या बाहेर आहे, त्यामुळे फलंदाजांना काही दिक्कत होत नाहीये. धावसंख्या 33. 3 गडी बाद 3 for 3. अजय लांब पडल्याचा रणप फारीकडनं राईट आर्म ओव्हर द विकेट. हा उसळी घेणारा चेंडू वाईट घोषित केला पंचांनी. यावेळी सुद्धा डावी अष्टी मिस होते. वेग आहे पण नियंत्रण आणि अनुशासन जे महत्त्वपूर्ण अंग आहे गोलंदाजीचं, त्याचा थोडा अभाव दिसला. सहावं षटक, पॉवर प्लेचं शेवट षटक मार्गस्थ होताना 34 धावा 3 गडी बाद. धावफलक आतापर्यंतच्या या सामन्याची कहाणी बया करताना
यावेळी हाही लेग स्टिक मिस करतोय चेंडू आणि हाही सुद्धा चेंडू वाईड घोषित करण्यात आलाय. लागोपाठ दुसरा वाईड. प्रथम ज्यावेळी फलंदाजी करणारा संघ गोलंदाजी करत होता त्यावेळी त्यांनी 15 अवांतर चेंडू टाकले होते. त्याच्याशी बोललं जाते अजयशी, कुठली लाईन कुठली दिशावर चेंडू टाकायचा आहे, कुठल्या लेंथवर चेंडू टाकायचा आहे. एक जबरदस्त प्रतिभाशाली खेळाडू आहे, नक्कीच तो कमबॅक करेल. यावेळी क्लासिकल स्ट्रोक. उजटच्या बाहेर थोडी विड दिली होती. ओपन द फेस ऑफ द बॅट अँड गाईड टुवर्ड द डीप बॅकवर्ड पॉइंट फॉर अ सिंगल. हळूहळू हा सामना आता 6 षटकांचा जो पॉवर प्लेचा कोटा आहे त्याच्या शेवटी येतोय. पॉवर प्लेचा फायदा उठून दिला नाही आहे टीम FTLच्या गोलंदाजांनी. पॉवर प्लेमध्ये 3 विकेट घेतल्या म्हणजे तुमची पकड मजबूत असते. यावेळी लॉफ्टेड चार्ट कव्हरच्या डोक्यावरनं स्वीपर कव्हर क्षेत्र खाली आहे. सुनसान इलाका. चेंडू निघून जाईल तिथून 4 धावांसाठी. नाईस टायमिंग शॉट. पुन्हा एकदा ऑन द राईस हा फटका खेळण्यात. 4 धावा अशा फटक्याची गरज आहे संघाला. पण कमीत कमी प्रत्येक षटकात 2-3 मोठे फटके पाहिजे आता अनिवार्य आहेत, कारण धावगती वाढली आहे, रन रेट वाढलाय. यावेळी जागेवरूनच पूल करताना उजवीच्या बाहेरचा चेंडू हा लेग साईडला खेचताना पाहायला मिळाला फलंदाज. बॉल आणि बॅटचं काही कनेक्शन होत नाहीये, मुलाखतच होत नाहीये. चेंडू निर्धाव येतोय. स्विंग अँड मिस पाहायला मिळतंय. अजय पाटील पुन्हा एकदा फार एंडकडनं. यावेळी पुन्हा एकदा अप्पर कट ओव्हर द कव्हर हेड. स्वीपर कव्हरला चेंडू निघून जाईल 4 धावांसाठी. हा आखूट टप्प्याचा चेंडू होता. पुन्हा एकदा फलंदाज त्याच्यावर तुडून पडतोय. धावफलक आता कुठे वेगाने पुढे सरकतोय. 44 धावा 3 गडी बाद. जेव्हा आता पॉवर प्लेचा शेवटचा चेंडू 6व्या षटकातील येणं शिल्लक आहे. आतापर्यंत 7 धावांची सरासरी राखली. त्या 2 चौकारामुळे धावफलक थोडा वेगाने पुढे सरकताना दिसतोय. आता कुठे एक स्वीपर कव्हरला खेळू ठेवणार का नाही. पुन्हा त्याला सर्कलमध्ये बोलवण्यात आले. यावेळी हलक्या हाताने खेळून एकदा पूर्ण केली. स्ट्राईक आपल्याकडे ठेवलाय फलंदाजांनी. षटकही पूर्ण होत आहे. 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर 229 धावांचा पाठलाग करताना सुलक्षण कुलकर्णी क्रिकेट अकॅडमी संघाची धावसंख्या 45 धावा 3 गडी बाद. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6th ओव्हर 45 for 3. बघूया आता यापुढे हा सामना कसा पुढे जातो ते आपण नक्की पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. आणि यासाठी मी समालोचन कक्षात फेरबदल करतो आणि आनंद श्रेष्ठ यांना पाचारण करतो पुन्हा एकदा सुमधूर इंग्लिश भाषेमध्ये. ओव्हर टू आनंद.
Thank you so much, Bunty sir. At the end of the 6th over, 45 on the board for the loss of 3 wickets. On the strike end, Pratik Warang. Coming on to bowl, Yatin Madhvi. What a knock he played. The fag end of the inning. Gautam Sathe at the non-striker end. 5 of just 6 deliveries. Pratik Warang, both the batsmen have just come in. Trying to settle it down. 229 is the chase. Full line delivery, nicely driven down the ground. Going down to the cover region. Outstanding effort from the fielder. Just stays that delivery 15 to 20 yards. And at the last moment, a diving effort. Sliding full length dive. Really good to see. What an effort. 47 for 3. 6.1 overs in the game. Short of line delivery. Rocks on the back foot. Played down to the cow corner. Oh, maximum. Really good hit. 50 up for the batting side. 170. 53 for 3 and 6.2 overs. What an occasion this has been, the 14th season. Once again, this one on the good length area. Got on the back foot, pulled it nicely down to the long on region. Just a single. Good comeback delivery from Yatin Madhvi. 54 for 3. Seen many of the batsmen shining in this platform. Bowlers doing good. Flighted this time. Wrapped on the pads. Just the impact must have been outside the off stump. Would have gone away from the off stump, I believe. Good decision by the umpire. Officials for the day, Samir Dhirwani sir and Sagar Mule sir. Slower in the air. Just a flatter one. Nicely played on the onside. Just a single. Good wicket keeping by the wicket keeper. Just attacked that delivery. Just kept it for a single. 55 for 3. Last delivery to go in the 7th over. 174 more required. Coming back on strike, Pratik Warang. Flatter delivery. Goes on the back foot once again. This is up in the air. Going down to the mid-wicket region. Just away from the fielder. Inches away at the end of the 7th over. 56 on the board. We have seen lots of contest. Day before yesterday and today, the 3rd day of the 14th season in Thane Premier League. Famously known as Upamukhyamantri Chashak. This is the 14th season on a trot. What a brilliant platform this has been. The main anchor of the ship being respected Mr. Vikas Jirepale sir, a corporator and an Apex Council member of Mumbai Cricket Association. And it has been under the guidance of Deputy Chief Minister respected Shri Eknathji Shinde sir. What a grand opening we had on the first day itself in the 14th season. Deputy Chief Minister respected Mr. Eknathji Shinde we had in the opening ceremony. The grand occasion it was. This is the 6th match of this edition. SKCAS versus FTL XI. 229 to chase. Coming on to bowl, Parth Chandan. Nicely bowled, flatter delivery. Going left arm around the wicket. Pratik Warang at the striker end. Flatter one once again, this time just outside the off stump. Goes on the back to punches it to the point region. Sloppy work from the fielder. Otherwise, would have been really close to see had he picked up the and aimed at the striker's end. 57 for 3. 4 deliveries to go in the 8th over. This time wanted to play that slog sweep.
just away from the stump. Good bowling this from Par Chandan. Bowling a little bit flatter, mixing up his pace. Flatter once again on the pads, flicked nicely down to the deep square leg region. The first one taken quite swiftly by the batsman. Good fielding though. Attack that delivery, just one bounce over the stumps at the batsman end. 58 for 3. 7.4 overs done. Couple of deliveries left. 171 required. Good bowling this. Couldn't get the sweet part of the bat. Will wait for the umpire's signal. No signal. That means the outer half of the bat. Just a single. Good over this. Just 3 runs off this over. Just gave a little bit of flight. It is up in the air, down the cow corner region. Good hit, that one. Strong hit. That's a maximum. The end of the 8th over. The end of the 8th over. 65 for 3. Great hit down to the mid-wicket region. The last delivery of the previous over. To continue from the combox end, Yatin Madvi. Pratik Warang on strike. Both the batsmen looking good now. Flatter one to start with outside the off stump. Played on the offside down to the extra cover region. Just a single. Good throw down to the keeper's end. 66 for 3. Well flighted delivery, played back to the border. Good fielding of his own bowling. Not giving anything away in this over. Couple of deliveries, just one single. Once again back after a short drinks break. Looking good, those two batters. Started slowly but have gained momentum. At the end of the 10th over, 82 on the board. Still require 147 to win. Coming on to bowl, Vinay Kuvar into the attack from the combox end. At the striker end, it's Gautam Sathe. Flatter one to start with. Oh, what a stunner! Absolutely beauty of a catch. Was it
New batsman coming in, Jainil Nanda. What a catch from the bowler himself. Vinay Kuva just introduced into the attack. A flat delivery straight back to the bowler. Lovely catch. Short of length delivery this time. Rocks on the back foot. Played down to the cow corner region. A boundary to start with his inning. Jainil Nanda looks set from the onset. In the 11th over. Little bit tossed up delivery. Quite foolish that delivery outside the off stump. Driven nicely down to the cover region. Dot delivery. Straight in the hands of a cover fielder. 86 for 4. Short of the delivery. Rocks on the back foot. Didn't time it that well. Played down to the deep mid-wicket region. Just a single. 87 on the board. Been a good over, just a boundary in this over and a crucial wicket after the drinks break. 87 for 4. Platter won this on the stumps, just angling in. Good call from the batsman. Pratik Warang sending back Jainil Nanda. The Wise would have been really struggling there. Short of length delivery. Played down to the cow corner. A maximum. Really good hit to end over number 11th. 93 on the board. Arun Yadav to continue from the opposition end. That last hit of the previous over in the last delivery. Really big hit, showing the grit, the determination that they will go for the chase. Couple of steps down the track, open the face of the bat, played down to the backward point region, just a single to start over number 12. 94 on the board. Pratik Warang on strike, 36 of 23 deliveries. Looking good on set for a good score. 135 required of 53 now. Short of length delivery, just opening the face of the bat, played down to the backward point region. Good delivery, good rising delivery. It was in total control of that shot. Pratik Warang. 94 for 4. Team SKCS. Short of length delivery, pulled it nicely down the ground, down to the long on region. Good fielding, just a single. 95 on the board. 134 required, 51 deliveries. Sixth contest of this season, for season 14 Thane Premier League, live from Daduji Kondev Stadium. This time quite Fuller takes the outside edge.
Good fielding this from the short third man fielder. 96 for 4. Trying it out now, going for it. Jainil Nanda and Pratik Warang. Asking rate 15.96. This time nicely driven on the up, down to the cover region. Good fielding, but can't stop that for going for a single. 97 on the board. That's been really good work in the field. Top notch from the fielders as well. Good bowling, led by from strong batting in the first inning. 97 on the board. Jainil Nanda back on strike. Slow on this time. Roll over his wrist. Played down. Upishly down to the backward point region. Just a single. Good fielding once again. At the end of the 12th over, 98 for 4. Still require 131 runs to win with the asking rate of 16.38 in just 48 deliveries. Jainil playing a good shot. Inside out shot down to the extra cover region. Just a single. Start over number 13. 130 of 47. Getting away this match pretty quickly. 16.6 is the ask. Pratik Warang on strike. Little bit toss of delivery, but a little bit flatter. Nicely pushed on the offside. A quick single. 100 up in 12.2 overs. 129 more required now. Toss of delivery, brilliant delivery that takes the outside edge, goes down to the third man region for a boundary. Forward, takes the outside edge, no slip there, a boundary. Slower one once again, wanted to slog hit it. Going for the second throw is coming at the non-striker and it was a brilliant throw. But the bowler couldn't collect it. Really good throw from Ajay. Had the bowler collected it, it would have been really close. I believe the batsman at the non-striker end was struggling. 106 on the board. 2 deliveries to go. Just outside the off stump. Cut it nicely down to the extra cover region. Just a single. Good fielding once again. The ground fielding has been top notch from the fielding side. FTL XI. The runners-up of last year's edition. 13th year, 13th season. Last delivery of the 13th over. Little tossed up delivery just outside the off stump. Pushed it to the cover region. Dot delivery to end over number 13. 107 on the board for the loss of 4 wickets. Still require 122 runs to win. The required rate 17.43. What an occasion this has been for all the young cricketers out there and seasoned campaigners
Yesterday it was the auction of Mumbai T20 League. Congratulations once again to Shashikant Kadam being retained in Eagle Thane Strikers team. Many of those players getting selected in Falcon team as well, and as well as Eagle Thane Warriors team. Starting up the next over, nicely played down the ground, down to the long off region. Just a single. Arun Yadav to continue. Single of the first delivery. 108 on the board. 14th over in progress. Pratik Warang on strike. Nicely played once again down the ground. Couldn't get the sweet part of the bat. Nonetheless, a single. 120 required of 40 deliveries. $228 on the board, chasing a target, safe target of 229. Slow one this time. Nicely cut down to the deep backward point region, going for the second run. Good fielding. Just a couple of runs. 111 for 4. That's the Nelson score. 1-1-1 for 4. Three deliveries to go. Good delivery, that one leaving the batter just outside the off stump. Wanted to drive it on the up. Just no footwork at all on that previous delivery. Jainil Nanda has looked good. 19 of 13. Need to up the ante. 118 required of 38. 18.63 the asking rate. Short of length delivery. This is up in the air. Not very intended. Nonetheless, behind the keeper's head, just a single. Good fielding by the fine leg fielder. 112 on the board. Pratik Warang back on strike. Last delivery of the 14th over. Just a good run up for Arun Yadav. Nicely bowled right in the block hole. They are stealing a single there. Really good effort from the batsman. Good piece of running. Good communication at the end of the 14th over. 113 on the board. Still require 116 of just 36 deliveries. That's what I said yesterday. What a big day for all the cricketers. Mumbai Premier League, Mumbai T20 League auction, and all those players who played this year edition as well have been selected. Shashikant Kadam, Anish Chaudhary, the centurion from yesterday's match, Ishan Mulchandani, the player who debuted in the month of January for Vijay Hazare Trophy. Ishan Mulchandani playing this match as well. Suved Parker, half centurion from the first match. Atharva Ankulekar, the man of the match of the yesterday's match, 3 wickets and a half century. Rohan Raje, Hardik Tamore, Sairaj Patil, a half century under his belt, and Mohit Avasti. Still many more names to come. What a platform this has been. What a stage this has been for all the cricketers around Thane and in Maharashtra. 14th season on a trot. Full toss. That was hit ferociously back to the bowler. In the first over itself, he had taken such sort of a catch. This time, couldn't held it on till the last moment. Just a single. Vinay Kuvar to continue. 114 on the board. 5 deliveries to go. Just started this 15th over of this inning. Jainil Nanda to continue. At the striker end, 20 of 14 deliveries. At the striker end.
Wild slog down the ground, down to the long on region, just a single. Very good performance this has been from FTL 11 with the bat in their hand. First the batsman did a great job, now the bowlers and the fielders as well. Been really good and uprooted the stump. We'll just wait. Yes, definitely it is a wicket. Wicket goes down. Pratik Warang will have to go back in the dugout. Really good bowling this. Couple of deliveries leaving the batter. This one coming in. Totally outfoxed the batsman. Wicket goes down. That's what I said. 14th season on a trot. The main anchor of this ship has been respected Mr. Vikas Jirepal, a corporator and an Apex Council member of Mumbai Cricket Association. All those years, it has been under the guidance of Deputy Chief Minister, respected Mr. Eknathji Shinde, sir. What an occasion, what a grand platform. Live from Dadoji Kondev Stadium, Thane. Fall of a wicket, new batsman coming in, Lokik Valvi. The target getting stiffer and stiffer. 114 runs more required of 33 deliveries. The asking rate 20.73. .3 overs, 22 for 2. Second success he had just now. Vinay Kuvar. Three deliveries still to go in the 15th over. Toss of delivery, played with an angle bat, dot delivery. Couple of deliveries left in the 15th over. Lokik Valvi have just come in. Jainil Nanda at the non-striker end. Good delivery this once again. Just ricocheted off his bat. Once again a wicket. Third success for Vinay Kuvar. Sixth wicket down now. Totally falling like 9 spins now. In a shamble, the chase. 115 for 6. New batsman coming in, Sohan Talekar. Did well with the ball in his hand. Last delivery went in the 15th over. 114 required of 31. Totally turn around. Nicely bowled this time. Wicket goes down. 3 wickets in just 4 deliveries. A 4-for for Vinay Kuvar. Brilliant bowling this. 3 wickets in just a single over. At the end of the 15th over, 115 for 7.
That's what I said. Falling like 9 pins. 3 wickets in just 4 deliveries and 3 of them getting bowled. Outstanding. And 1 caught back by the bowler himself. $115 on the board for the loss of 7 wickets. 5 overs remained. 114 required. Getting stiffer and stiffer. Quite away from the chase. Vinay Kumar. What a brilliant spell he had. 3 overs, 4 wickets for 22 runs. 7.33 the economy rate. Vinay Kumar, 3 bowled and 1 caught back. 22 runs just he has given in 3 overs and picked up 4 for. Will he pick up a 5-for? Short of length delivery, nicely cut it down to the extra cover region. Good fielding though. Not giving away any easy runs. Couple of runs being added to the score. 117 on the board. $29 deliveries left. Short of length delivery just outside the off stump once again. Cut it down to the sweeper cover region. Just a single. 118. 118 for 7. 111 required of 28 deliveries. Aryan Dalal, the new batsman. Amit Yadav to continue from the far end. Flatter on once again on the off stump. Driven nicely down to the cover region. Just a single. Good fielding by the long off fielder. Wayward throw. Just an extra bounce on that throw. Just away from the wicket keeper. 3 deliveries left in the 16th over. Going along nicely, the team FTL XI. This time, good paddle sweep. Down to the square leg region. Just a single, 120 on the board. 120 for 7. 109 required. 26 deliveries left. Going down the track. Throw at the non-striker and had it hit the wickets on the full. I believe the batsman was struggling. Just a single, nevertheless, 121 on the board for the loss of 7 wickets. Last delivery to go. Jainil Nanda on strike. The tossed off delivery, a paddle sweep. Good fielding from Naveen Sharma. There is an appeal, but the batsman was comfortably in his crease. At the end of the 16th over, 122 on the board. Still required 107 of 24 deliveries. The asking rate 26.75. Coming on to bowl once again. Continue. 3 overs prior to this, 4 for 22. Will he be the first bowler in this edition to take a 5-for? Tossed off delivery, played nicely, inside out shot down to the extra cover region. Couple of bounces over the fence. Brilliant hit that one from Jainil Nanda.
126 on the board with that hit. Flatter one this time on the pads. Just a flick of the wrist. Played down to the short mid-wicket region. The verdict from the third umpire, OUT, out. So that's the 8th wicket. Run out under his name once again. Gets for Vanekwar. Will he get a fifer? The first one he will be in this.
Navin Sharma to continue from the far end. 3 overs left in this contest. Nicely cutted, straight to the cover fielder. Not much fight left now in this contest. 96 required of 17. Played down to the long off region. Single, 134 on the board. Just 2 overs left after this. Just a mere formality. Daksh Sharma on strike. All the 3 departments ticked by FTL 11. The batting clicked, bowling side has clicked, and the fielding as well. This time nicely played down to the extra cover region. New over. Yatin Madvi to continue. Flighted delivery on the pad, just helped it around down to the vacant region between the fine leg and the deep square leg region. Starts the penultimate over with a boundary, 148 on the board. Jainil Nanda moves on to 37. Just nothing left into the contest, 11 deliveries left, 81 to get. Jainil Nanda. This is nicely hit down to the mid-wicket region. There is a protection out there. Just a single. 10 deliveries to go. Just some positives to the batting side. Jainil Nanda has looked good. Couple of batsmen looked confident. Ishan Mulchandani bowled well. Till the onslaught from Yatin Madvi. This time short of length delivery. Good work from the wicket keeper. Wicket goes down. Yes, definitely that was adjudged out from the umpire. Wicket goes down.
Arsh Makharia. Nicely bowled this, just outside the off stump, leaving the batter at the last moment. Couple of deliveries left in the penultimate over, 149 on the board. Toss of delivery, a full toss, played nicely down the ground, down to the long off region. Just a single. 150.
Please gather in front of the presentation arena for the presentation of Star of Player Award. दोन्ही संघांना विनंती आहे जरा 2 मिनिटं आपण इथे यावं. प्लीज. मी सन्माननीय उदय गायने सर आणि सनीजी बुशिंग आपण यावं आणि आज प्रेझेंटेशन मनोज जाधवशी आपणही प्रेझेंटेशन कक्षामध्ये जॉईन व्हावं. ठाणे प्रीमियर लीग सीझन 14. Please put a hand together for both the team. What a performance given by both the team in this match. आज या ठाणे प्रीमियर लीगच्या ठाणे प्रीमियर लीगच्या या सीझनमध्ये आज आपण त्या खेळाडूचा सत्कार करणार आहोत ज्याने मुंबई रणजी संघामध्ये आपलं प्रदर्शन केलं. प्लीज पुट अ हँड टुगेदर फॉर ईशान मूलचंदाने. आई ईशान जी, आपका यहाँ पर खास स्वागत और सत्कार इस ठाणे प्रीमियर लीग के 14वें एडिशन में हम करने जा रहे हैं. वतीनं ईशान मूलचंदाने जो मुंबई रणजी ट्रॉफी संघाचा प्लेयर आहे त्याचा इथे खास स्वागत आणि सत्कार आपण करत आहोत. वेल डन एंड कांग्रेस. क्या कहेंगे सर, आज आप यहाँ पर कैसा लग रहा है आपको पहले यहाँ पर खेलते हुए? सर मेरा पहला टाइम है यहाँ पे खेल के. इट्स अ ग्रेट टूर्नामेंट. आई वांटेड टू प्ले इट लास्ट ईयर बट अनफॉर्चुनेटली वाजंट एबल टू प्ले. सो वेरी ग्रेटफुल टू हैव हैड द चांस टू प्ले टुडे फॉर द टीम. Great wickets. I think really good balls you're providing. It's a great tournament and it's a great preparation for the दिस इज ऑन द प्लेटफॉर्म. ये जो प्लेटफॉर्म है, जो आने वाले जो नए खिलाड़ी हैं उनको आप जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी के साथ खेलने का मौका मिलता है. इट्स अ ग्रेट बूस्ट फॉर द ठाणा क्रिकेट. क्या कहना चाहेंगे? Yeah, it's a great initiative. Every team has 2 icon players, so it's a great learning experience, I guess, for some of the youngsters who can hopefully reach the level that we're playing at and become stars in the future. यस, थैंक यू वेरी मच. एंड हम चाहेंगे कि वैसे ही आप जैसे खिलाड़ी यहाँ पर आते रहे और हमारा ठाणा का. हेलो, नाउ टाइम. अब उस खिलाड़ी का हम स्वागत करने जा रहे हैं. तंजानिया जो कंट्री है, उस कंट्री से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले इसी टूर्नामेंट से निकले हुए वो खिलाड़ी जिनका नाम है अरुण यादव. जरा जोरदार ताली होने चाहिए. वर्ल्ड कप क्वालिफायर के जो तंजानिया टीम से वो खेल चुके हैं. एंड कांग्रेचुलेशन अरुण जी. हेलो अरुण जी, अरुण यादव जी, आज आपको फिर से देखने का हमें भी मौका मिला. हमने देखा था आपका परफॉर्मेंस जब से ये टूर्नामेंट शुरू हुई थी. क्या कहना चाहेंगे सर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. ये खेल आपने यहाँ बुलाया, इनवाइट किया मुझे. दूसरा चीज़ ये है कि वेरी फर्स्ट टूर्नामेंट जब ये स्टार्ट हुआ था, पहला सीज़न, तब से हम खेल रहे हैं यहाँ पे. और सब बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है प्लेयर्स के लिए. अच्छा ग्राउंड मिल रहा है उनको, अच्छे प्लेयर्स के बीच में खेलने मिल रहा है.
जिससे उन्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है जो आगे जाके वो बना सकते हैं इन सब चीज़ों को। क्या कहना चाहेंगे जो न्यू जो अपकमिंग प्लेयर आ रहे हैं उनके लिए? मैं यही कहूँगा कि जो भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उसको दोनों हाथ से इनकैश करने की कोशिश कीजिए। हर एक मैच इंपॉर्टेंट होता है। आपकी लाइफ कब चेंज हो जाए किसी को पता नहीं, कौन कहाँ से देख रहा है हमें पता नहीं। आप अपने प्रोसेस पे फोकस कीजिए, ट्रस्ट कीजिए अपने कोचेस को, अपने हार्डवर्क पे ट्रस्ट कीजिए, लाइफ कभी भी चेंज हो सकती है। यस, वेरी गुड सर। क्या कहने, जोरदार ताली होनी चाहिए अरुण जी यादव। नाउ टाइम फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड। वो खिलाड़ी जिन्होंने बल्लेबाजी करते हुए हम सबको एम्ब्रेस किया, 85 रन की वो इनिंग जिसके लिए चुना जाता है स्टार ऑफ द मैच अवार्ड, अनिल रोनाक्याई। जोरदार ताली होनी चाहिए। क्वालिटी स्पोर्ट्स की तरफ से ये स्पेशल ग्लोव्स और स्पेशल मोमेंटो। अनिल जी आइए, कॉन्ग्रेचुलेशन। दो बातें करेंगे। कैसा लगा सर ये परफॉर्मेंस? पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। कैसा लगा ये आज का खेल, क्या कहना चाहेंगे? Firstly, thanks to the FTL team for giving this opportunity, and thanks to Vikas Dada for this wonderful tournament which has been organized every year. I have been playing this tournament for the last 3 years, and I love to play here. So, coming to the performance, it's a team game. I'm happy to contribute for the win. That's it. आई होप सो। और फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन। हमें वापस आपका गेम देखना है, क्या ये रिपीट होगा? It's depend upon the day. Everyone has their own day. So thank to God for this innings. Let's see what comes next. यस रियली, कॉन्ग्रेचुलेशन। ताली होनी चाहिए। वो इनिंग जो संयम और आक्रमण के साथ खेली गई, अनिल रोनाक्याई द स्टार ऑफ द मैच अवार्ड विनर। तो यही था दोस्तों, फिर से मिलेंगे कल जरूर। और दो दिग्गज टीमें यहाँ पर शामिल हो रही हैं, उनके बीच ये जबरदस्त प्रतियोगिता शुरू है। ठाणे प्रीमियर लीग, ठाणा जिले के क्रिकेट की कहानी इस प्रतियोगिता की जुबानी और इस प्रतियोगिता से आप देख सकते हैं। तो जरूर मैं ठाणे क्षेत्र के सभी हमारे जो दर्शक हैं, जो नागरिक हैं, जो क्रीड़ा प्रेमी हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि जरूर आइए आप स्टेडियम पर और यहाँ से आकर मैच को देखिएगा और अपने जो भी खिलाड़ी जो उभरते सितारे हैं उनको ज़रा प्रोत्साहन देने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। तो ज़रूर मैं आपको आमंत्रण देना चाहूँगा। फिर से मिलते हैं कल सुबह ठीक 9 बजे मैच शुरू होगा। तब तक के लिए हम अभी रुकते हैं, लेकिन आप देखते रहिएगा ठाणे प्रीमियर लीग एडिशन 14। थैंक यू।